Hello guys, welcome back to another live stream and today we are going to play Genshin Impact और आज हम लोग इवेंट करेंगे नया वाला जो आया था आई गेस एक वीक पहले और आप एक वीक बात कर रहे हैं बट अभी सारा का सारा खुल चुका है तो हम एक बार में पूरा स्टोरी क्वेस्ट करेंगे एंड लेट्स होप कि क्वेस्ट के पीछे स्टोरी क्वेस्ट लॉक ना हो हमारे इवेंट का क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बार में ही ख़त्म करते हैं पूरा स्टोरी देन धीरे धीरे करके इवेंट करेंगे वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ सो दैट्स गोइंग टू प्लान फॉर टुडे स्ट्रीम सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन जितने बंदे अब तक स्ट्रीम पे आओ गाइस लाइक कर दो गाइस स्ट्रीम को जितने बंदे स्ट्रीम पे न्यू है गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम लेट्स जंप इनटू द गेम एंड चलते सबसे पहले आप लोग की चैट पढ़ते हैं एंड उसके बाद चलेंगे गेम में इवेंट क्या कहते हैं कमीशन करके इवेंट चालू करेंगे तो मुझे दिख रहा है फ्रैगर सबसे पहले स्ट्रीम पे आया तो हेलो फ्रैगर वेलकम टू द स्ट्रीम हेलो डाउन गेमर वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे को आज कैंडिस मिली यूज़ करूँ देख ओपन वर्ल्ड में तेरे को करना है डाउन गेमर तो कर सकता है ठीक है मज़े के लिए तेरे को करना है मज़े करने हैं तो कर सकता है बाकी हार्ड कंटेंट पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कैंडिस यूज़ कर पाना लाइक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी तुमको कैंडिस के अराउंड यूज़ तो तुम कर सकते हो बाकी मैं बोलूँगा अगर तुम्हारे पास बाकी कैरेक्टर हैं तो मत करो कैंडिस इस्तेमाल जरूरी नहीं है कैंडिस इस्तेमाल करना बाकी तुम्हारी चॉइस है डाउन गेमर अरे सुजा भाई आप जेंसिन भी खेलते हो अरे तुमको आज मालूम चला डाउन गेमर क्या बात कर रहे हो तुमको पता नहीं था इतना टाइम से हेलो हरी साहब वेलकम टू द स्ट्रीम कैसे हो हरी साहब क्या हाल चाल है मेल आए हुए हैं कुछ लेट मी चेक क्या है ओह नाइस सो मेनी प्रीमोस गाइस सो मेनी प्रीमोस क्या कंपनसेशन आया था क्या ऊपर अभी ये इवेंट सर्वे था ये चेक इन था अच्छा हाँ ये तो क्या कहते हैं आई रिमेम्बर दिस वन इज फ्रॉम ट्विच ट्विच गेमिंग की तरफ ट्विच बोल रहा हूँ अमेजॉन प्राइम गेमिंग की तरफ से आई थॉट कुछ रिवॉर्ड वगैरह आया है हमारे लिए फिक्स करने के लिए एंड लेट मी सी मेरे पास मैंने आई थिंक कमीशन सुबह ही कर लिए हैं आई थिंक हाँ कमीशन सुबह कर लिए हैं कंडेंस देखें कंडेंस कितने बड़े हैं अगर कंडेंस होंगे तो थोड़ा फार्म कर लेते हैं आर्टिफैक्ट क्योंकि चाहिए है मुझे आर्टिफैक्ट एक्चुअली में क्या कहते हैं कुकी का आर्टिफैक्ट स्विच करने हैं मुझे सुजा भाई आप तो कुछ और खेलते थे भाई ये सुजा भाई नहीं है जुड़वा नहीं अबाउट एफिंग टाइम योर लेजी क्या आई डोंट केयर हरी साहब तुम क्या बोलते हो देखो हमको इससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोलते हो हम तो तुमको इग्नोर मारते हैं हरी साहब आई एम गुड अबाउट व्हाट अबाउट यू आई एम ऑल्सो गुड हरी साहब हाँ फ्रैगर मुझे पता है मैंने गलती से डाउन गेमर बोल दिया वो मेरे को कॉन्शियसली मेरे को समझ में आ गया था कि मैंने गलती से तेरा उसका नाम ले लिया है बट मैंने पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि किसी ने नोटिस नहीं किया तू तेरे को बड़ा पॉइंट करने की पड़ी है हैं? ये सही है हाँ पैराडाइज स्विच करना है क्योंकि गिल्डेड पे काफ़ी कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो गिल्डेड को फ्री रखने के लिए मैं पैराडाइज भी फार्म करके रख रहा हूँ इन केस पैराडाइज किसी और को लगता है तो वो दे तो पाऊंगा मेरे पास पैराडाइज होना चाहिए ना पैराडाइज सेट है नहीं अभी काजुआ के लिए फार्मिंग काजुआ आने के बाद ही करेंगे मोस्ट लाइकली हम ताकि एक बार पता चल जाए काजुआ आ गया है तब फार्मिंग करेंगे हम अभी फ्री हैं तो कुछ भी फार्म कर सकते हैं मैं तो सोच रहा ले लाइन करूँ कुछ टाइम क्योंकि बुक्स वगैरह ख़त्म हो रही हैं लेकिन आई थिंक इवेंट से एनफ बुक्स मिल जाएंगी तो ज़रूरत नहीं है अपन को फ्रैगर की मेंबरशिप ख़त्म हो गई है फ्रैगर मना कर रहा है मेंबरशिप लेने से देख रहे हो क्या दिन आ गए हरी साहब आई थिंक हम 5 रन करते हैं वो फ्रेजाइल रखे रहने देते हैं देखेंगे अगर इमरजेंसी लगेगी तब खोलेंगे वो फ्रेजाइल अभी नहीं खोलते हैं
Drain cutter. Speed of light. Incoming. This may turn a little. Stabilize. I see everything. With sword comes shadow. Don't blink. ये कब स्पॉन हुआ उस साइड वाला? दिखा ही नहीं मुझे. Let me read you a book. Speed of light. Committed to memory. Nowhere to hide. And also don't be a member of Arisa. Hi Grandex, welcome to the stream. लूंगा membership लेकिन अभी नहीं. कब फ्रैगर कब? वही तो क्वेश्चन है, कब? I will tell you by joke, that's why. क्या है ये सब? नाइस, इसमें एलिमेंटल मास्टरी है, इसको रोल करके देख सकते हैं हम. मेरे को ईएम वाले पीसेस चाहिए हैं यहाँ से जितने हो सकें. मेरे को समझ में नहीं आया तूने क्या लिखा है यार, ये सब किसके लिए लिखा है? Stabilize. Hey! No, my sword. Rain cutter. Incoming. Cut to the chase. Speed of light. Hey! Solidify. I see everything. Don't blink. Roll. Rain outlines your fate. Let me... Nowhere to hide. Incoming. This way pretty. कसम से राइडन ले आता, इससे जल्दी हो जाता. चार एक एक करके एनिमी स्पॉन हो रहे हैं, पूरा बदर रोटेशन खराब कर दे रहे हैं. Cut to the chase. पूरा रोटेशन खराब कर दे रहा है, एक एक करके एनिमी स्पॉन हो रहे हैं. तो स्टार्टिंग में 3 होते हैं, फिर एक स्पॉन होता है, एक मरता है, तो फिर 2 मरते हैं तो 2 स्पॉन होते हैं. एक एक करके स्पॉन हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा. मैं स्विच करके आता है टीम. एक सेकंड, डबल डिफेंस नहीं करूँगा रोल, नहीं करूँगा. हेलो एरर, वेलकम टू द स्ट्रीम. आर्टिफैक्ट फॉर वू कुकी ऑब्वियसली ग्रैंडेक्स. It's for Fragger. He asked, so why I replied joke. That's why. Friend, don't forget to like it. Yo Davis, welcome to the stream. कैसे हो डेविस? 3 और रन कर सकते हैं, अभी 3 और पड़े हैं हमारे पास. पता मैं लगभग पता है 1 वीक से फार्म कर रहा हूँ, मुझे अभी तक एक भी ईएम का पीस नहीं मिला. पता है उल्टा ईएम का पीस इसमें मिल गया है मुझे, क्या कहते हैं, डेजर्ट पेविलियन पे मिल गया है. सच बता रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला मुझे, क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट पीस उसमें पैराडाइज में ईएम का ढंग का. I was playing Dead Frontier 2. ये कौन सा गेम है? ही को भाई फाइनली मेरे एग्जाम खत्म हो गए. कैसा फील कर रहे हो एग्जाम खत्म होने के बाद डेविस? और अब एग्जाम खत्म हो गए, अब क्या प्लान्स हैं? अबे क्या कर रही है नाइडा? Think you can get away? There is no escape. On to oblivion. Shine down. Solidify. Roll.
बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी क्या प्लान्स हैं अभी एग्जाम के बाद? कहीं घूमने जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो? फेदर एंड फ्लावर पे इजी मिल रहा है लेकिन सैंड और गॉबलेट पे नहीं मिल रहा। तुम सैंड और गॉबलेट की बात कर रहे हो, हमें सर्कलेट और क्या कहते हैं गॉबलेट पे नहीं मिल रहा है। तुमको पता है हमको कितना टाइम लगा था उसमें क्या कहते हैं गिल्डेड पे ईएम, प्रॉपर गिल्डेड में ईएम आर्टिफैक्ट पाने के लिए? मेरे को 3 वीक लगे थे, लिटरली 3 वीक लगे थे। ये देखो डेजर्ट पेवेलियन में वापस से ईएम और एनर्जी रिचार्ज के साथ पीस दिया है, लेकिन ये गार्बेज दिया है यहाँ पे पैराडाइज ऑफ लॉस्ट पे। इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी शूटर विद नो सर्वाइवल गेम। अच्छा वो, अरे वो खेलो एलियन शूटर खेलो, तुमको मजा आएगी पता है। एलियन शूटर 1 2 3 खेलो, 3 हम खेलोगे मजा आएगी तुमको एलियन शूटर में। खेल के देखो एक बार, आई थिंक चल जाएगी तुम्हारे गोविंद, तुम्हारे पीसी में एलियन शूटर गेम इजीली चल जाएगी। बहुत सही गेम है। Everyone focus. Time for takeoff. There is no escape. Now you shall perish. Let's play. Gather. Think you can get away? Commit to memory. Shine down. Torn to oblivion. हाँ मेरे को याद है। जेंसन में 2 इवेंट करने हैं और कॉल ऑफ ड्रैगन में 2 मिलियन पावर पहुंचना है। घूमना था आज, गया था लेकिन देखते ही आ गया। क्या घूमने आज गया था लेकिन क्या करके आ गया मैं? देखते ही आ गया मतलब? फाइनली इवेंट खत्म किया है। मैंने सुना है बहुत लंबा इवेंट है, मजा आएगा करने में क्योंकि पूरा खुल गया है। ईएम पीस दिया विथ एचपी एंड क्रिट रेट यहाँ पे। कुड बी गुड। अटैक परसेंटेज सर्कुलेट कौन यूज करता है? एलियन शूटर 2D गेम मान सकते हो, 2D है गेम एंड ऐसा ही है मतलब लाइक तुमको गन दे देगा, अपग्रेड्स मिलेंगे, बीच में एनिमीज को मारना होगा, हेल्थ पैक्स मिलेंगे, एनिमी लाइक ड्रॉप करेंगे तुम्हारे लिए चीज़ें, अपग्रेड्स वगैरह उठाओगे और आगे फाइट करनी होती है। बॉसेस भी अच्छे अच्छे हैं उसमें। Time for takeoff. There is no escape. Now you shall perish. पीसी में है लेकिन मोबाइल में पता नहीं है कि नहीं। एलियन शूटर बहुत पुरानी गेम है क्योंकि। Think you can get away? Hey. Torn to oblivion. मेरे अल्ट के पहले ही मर गए क्या ये लोग? कोई नहीं दिखा मुझे अल्ट जब खत्म हुई कहीं पे भी। Illusion shattered. No, the game good. I was playing Valo and got the timer ban. मेरा भी कर दो इवेंट शशि भाई। मैंने बोलते देखते ही आ गए। अच्छा अच्छा, देखते ही आ गए। क्यों, ऐसा क्या करने गए थे कि तुमको मालूम ही नहीं चला कि कब गए कब आ गए? ऐसा क्या कर रहे थे? दिस गेम इज नॉट 2D, बट मैं बोलूँगा वो 2D में है। वो मैं जो गेम सजेस्ट कर रहा हूँ वो 2D में है, बट अच्छी गेम है, लाइक फन गेम है वो एलियन शूटर। और साइज में भी बड़ी नहीं है। चलो अभी इवेंट करने चलते हैं क्योंकि वी आर डन विद द रन्स। डोमेन क्यों कर रहा है? कुकी के लिए फार्म कर रहा हूँ। सुना हूँ कि इस डोमेन के आर्टिफैक्ट से कुकी को ज़्यादा बफ मिलता है डैमेज में, एंड डैमेज अच्छा करती है कुकी। और वैसे भी गिल्डेड के लिए बहुत कैरेक्टर्स को गिल्डेड चाहिए। अभी वो क्या कहते हैं, कावे मिल गया ना, तो कावे को भी
गिल्डेड ड्रीम्स ही चाहिए है। तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट ये, क्योंकि मेरे को पता है भाई, मेरा पता है एक सेट था सिर्फ जो कुकी पे लगा था, दूसरा सेट मैंने उसके लिए क्या कहते हैं, हाँ दूसरा सेट मैंने याओ याओ के लिए फार्म किया था ना। आई रिमेम्बर कि लाइक सब कुछ मिल गया था, सिर्फ सर्कलेट या गॉबलेट में एक ईएम पीस चाहिए था, वो कभी नहीं दिया। तीन वीक बाद मुझे मिला है वो एक सर्कलेट, वो भी ईएम का। तो याओ याओ कितना डिफिकल्ट था बिल्ड करना मुझे पता है। तो अब मैं वापस गिल्डेड फार्म नहीं कर रहा। पैराडाइज वैसे भी किसी न किसी कैरेक्टर को लग ही जाएगा फ्यूचर में आने वालों को, तो फार्म करके रख रहा हूँ इन केस यू नो किसी को लगा तो, नहीं तो एटलीस्ट एक सेट फ्री हो जाएगा मेरा। सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया वो डोमेन फार्म करते करते गिल्डेड वाला, क्योंकि पीसी नहीं मिल रहे थे। अब इस कल करेंगे, मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा है, आंखों में नींद भरी है, बट मैं बोला कि 3 दिन से स्ट्रीम नहीं किया तो आज करते हैं। लेट्स चेक द लक, अगर आज भी लाइट गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, नहीं तो कल करेंगे। और कल थोड़ा सेटअप भी बना के आना पड़ेगा मुझे अब इसके लिए यू नो। तो वो नहीं किया आज मैंने, तो इसलिए वो कल ही करते हैं बोला। ये का स्टॉल लगा भाई, ये कब आया है यहाँ पे स्टॉल? ये कौन सा स्टॉल है? ये कब आया है इधर पे? ओके, आई डोंट रिमेम्बर दिस स्टॉल एक्चुअली यहाँ पे। यो धीराज, वेलकम टू द स्ट्रीम। दिस इज अ मल्टीप्लेयर कैन प्ले विद फ्रेंड्स। हेलो, मेरा भी दिमाग खराब हो गया गिल्डेड में। अरे सबसे डिफिकल्ट होता है पता है, तुम जब पता टारगेट कर रहे हो ना खुद से कि भाई उसमें लाइक गिल्डेड में तेरे को ईएम पीसी चाहिए है, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तुमको मिल पाना। सच बता रहा हूँ, मुझे गिल्डेड में पता है इतने क्रिट डैमेज के साथ पीस मिले ना, क्या बताऊँ। मैं कब टारगेट कर नहीं रहा हूँ फिर भी मेरे को पीसेस मिले हैं वहाँ से, सोच सकते हो तुम। मतलब ईएम पीस 3 वीक बाद में जाके मिला है, ये पहले ही वीक में मुझे कितने सारे क्रिट डैमेज के पीसेस मिल गए गिल्डेड में, बट कोई किसी काम के नहीं, ये कोई कैरेक्टर मेरा इस्तेमाल नहीं करता है। भाई होंकाई में डिफेंस पीछा नहीं छोड़ रहा। हाँ भाई, होंकाई में भी डिफेंस पीछा नहीं छोड़ रहा है। अरे छोड़ेगा फ्रैगर, कुछ टाइम तो दो, अभी तो चालू किया होंकाई, ऐसे थोड़ी कि पहले दिन ही तुमको सब कुछ मिल जाए, थोड़ा टाइम दो उसको। 4 दिन खेल के ये नहीं बोला जाता है कि डिफेंस रोल हो रहा है, खेलना पड़ता है प्रॉपरली, टाइम देना पड़ता है। एक सेकंड, इवेंट का क्वेस्ट कहाँ पे, मेरे को वो नहीं पता है। सिर्फ ये क्या कहते हैं हमारा पेरिड ऑफ प्रोविडेंस ही आया ना नया, और कुछ तो नया नहीं आया ना हमारे इवेंट में। वो टेस्ट रन आ रखा है बाइजू का। गाइज लाइक कर देना गाइज, जो भी बंदे स्ट्रीम देख रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने बंदे स्ट्रीम पे नहीं हुए हैं। और तुम में से कितने बंदों ने बाइजो पुल कर लिया गाइज बाय द वे? कितने बंदों को बाइजो मिला? कितने लोग 50-50 जीत गए तुम में से? Come a little closer. The doctor was sealed. तो नॉर्मल अटैक से इसका वो लग रहा है, ईएम लग रहा है। सॉरी ईएम बोल रहा हूँ, डेंड्रो लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे सांप छोड़ू तो 1 2 3 बार रोटेट करके जा रहा है वहाँ पे। Body and brain outlines your fate. Let's find him. Seems like an emergency. ओह अच्छा, ये शील्ड तुम्हारी डेंड्रो पार्टिकल शूट कर रही है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल एनिमी को मार रही है। बात ये है सिर्फ यहाँ पे, सिंगल एनिमी को मार रही है वो। गुड टू नो दैट। Come a little closer. Surrender in religion. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये बाहर क्यों चले जा रहे हैं ये लोग। 37,000 HP दी है, 105 to 26 to 91।
35 हीलिंग बोनस दी भी है। जेड फॉल स्पेंडर दिया है R1 C0 विथ 888 टैलेंट एंड आर्टिफैक्ट में 2 पीस टेनासिटी 2 पीस वरुकासास ग्लो दिया है। इनके इतना दिमाग कब से आ गया बे? इतने अच्छे आर्टिफैक्ट कब से देने लगे कैरेक्टर को? इतना दिमाग कब आया इनके? बड़ी जल्दी सील टूट गई बे इसकी तो। 7000 का ब्लूम लग रहा है। Remember, health comes first. Mind the side effects. Witness the power of Shujha. मेरा काज क्रिटेड वाले पीस में 16 क्रिट डैमेज रोल हो गया। लोल रोल नहीं किया मैंने, मेन स्टैट पे डिफेंस मिल रहा है जो ऑर्नामेंट चाहिए सीली के लिए। बाइजो में कुछ पता ही नहीं चल क्या रहा है। टीम में प्योरली डिसअपॉइंटेड, नो फन फैक्टर, न्यूनेस। अरे बाइजो के साथ ऐसा है कि बाइजो सिर्फ अल्ट में सिंगल टारगेट को ही डेंड्रो लगा पाता है, मैंने सुना है। लेकिन जो उसका मेन सील्ड के साथ बफ है ना, जो तुम्हारा क्या कहते हैं वो ब्लूम रिलेटेड जितनी रिएक्शन है उनको जिस तरह से एचपी के बेसिस पे बफ दे रहा है, उसकी वजह से बाइजू की वैल्यू ज़्यादा है, ना कि वो सिंगल टारगेट को ही लाइक डेंड्रो लगा रहा है। प्लस उसकी सील्ड का अप टाइम बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई बाइजू की वैल्यू है। नहीं तो बाइजू की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जोंगली वगैरह है गेम में। बाइजू कैसा लग रहा है देख, प्रॉपर टीम के साथ यूज करने में मालूम चलेगा डेविस। मैंने देखा है बाइजू का प्ले, लोगों ने जो लगा लाइक C0 पर ट्राई करके देखा है वो देखा है लाइक, क्योंकि डैमेज जो इम्प्रूवमेंट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बाइजू के साथ तुम्हारे हाइपर ब्लूम और बारगॉन की। तो वो डैमेज बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, लाइक 10-15 हज़ार का डैमेज इंक्रीज, वो भी ब्लूम सुपर हाइपर ब्लूम और क्या कहते हैं बारगॉन के केस में सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, तो मेरे को लगा कि एक्चुअली वैल्यूएबल है बाइजो, बट नीडेड नहीं है एज सच। पता है अगर तुमको स्टिल कम डैमेज लग रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है इस पर तो फिर, और सील्डर की कमी है तो जाना चाहिए फिर बाइजो के लिए, क्योंकि क्या पता जोंगली कब आएगा अभी, क्योंकि अभी भी काफ़ी इस पर आने बाकी हैं। और प्लस डेंड्रो एप्लीकेटर मिल रहा है जो तुम्हारा काफ़ी टाइम तक तुम्हारे लिए डेंड्रो अप्लाई कर रहा है, तो अच्छा ही है। बट एज सच उसकी सील्ड में मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। हाँ पता है मुझे धीरज डीबूट देना चाहिए इनको, बट इन्होंने एचपी बिल्ड लगाया उसमें भी 36,000 एचपी थी, 50 के एचपी दिए थे तो कुछ समझ में भी आता। 36 के एचपी थी, वही मैं सोच रहा था चल क्या रहा है। हाँ हाँ देखा मैं ड्रैको, अभी पूरा नहीं देखा, मीम्स देखूंगा मैं, तूने बहुत सारे भर दिए हैं। बाइजो गुड फॉर साइनो, हाँ बाइजो इज गुड फॉर साइनो, क्योंकि तुम एनिमी से चिपक के खेलते हो ना, तो सील्ड जब तुम चिपक के खेलते हो किसी एनिमी से तो एलिमेंट अप्लाई करती है सील्ड, तो उसके साथ एक्चुअली साइनो मुंह में चढ़ चढ़ के मारता है। तो एक्चुअली बाइजो जो है साइनो के साथ बहुत अच्छा है। नहीं लेकिन 50 के एचपी दोगे ना धीरे, ड्रैको तो नहीं टूटेगा मे बी, शायद एचपी, और मेनली एचपी पे ही बिल्ड करना है, एचपी और ईएम पे ही बिल्ड करना है तुमको बाइजो। ईएम पे ना भी करोगे तो एचपी पे तो करना ही करना है, 50 के मिनिमम एचपी चाहिए ही चाहिए तुमको, जो कि इजीली गेन करी जा सकती है। हाँ करी जा सकती है R5 एक्चुअली, अगर उसको लें हम, R5 जो फ्री टू प्ले वेपन है उसके साथ अगर देखें तो ईजिली गेन हो जाएगी तुम्हारी 50 के एचपी। तो एचपी बिल्ड ही करना है उसको। एचपी इन्होंने एनफ दी नहीं इसलिए जल्दी टूट रही है सील्ड ट्रायल वाले की, एचपी एनफ देते तो नहीं टूटती इनकी सील्ड। किसने बोला नीलू ब्लूम के साथ वर्क नहीं करता है धीरज? करता है, किसने बोला तेरे को नीलू ब्लूम के साथ वर्क नहीं करता है बाइजू? बोल रहा है इलुचुल के पत्थर से टूट जाता है। Did you get the silly सूजा सर? नहीं, ये फ्रैगर ने वापस कर्स लगा दिया हरे साहब, क्या बोलूँ मैं।
फिर दूसरा अकाउंट जो बनाया था उसमें भी हरवा दिया 50-50। अब मैं डिप्रेशन मोड में है, मैं खेल ही नहीं रहा, छोड़ दिया होंका स्टार रेल खेलना। मैं संन्यास ले लिया है होंका स्टार रेल से। जोंगली बोलते हैं विद साइनो 20% रेस कम होगा ऊपर से। तो डेंड्रो में भी तो कम होता है रेस, डेंड्रो रेस कम होता है वो अलग बात है, लेकिन साइनो भी एग्रावेट रिएक्शन कर रहा है तो डेंड्रो रेस भी मैटर करेगा मेरे को लगता है। कितना परसेंट है? 30% है। हाँ तो 30% इज वे मोर यूजफुल देन 20% रेस डिक्रीज ऑफ जोंगली मेरे हिसाब से साइनो के साथ। Welcome to the academia. हाँ अगर वो फेवर नहीं कर रहा होता ना रिएक्शन को बाइजो, तो मे भी फिर कह सकते हो कि बाइजो लाइक अच्छा नहीं है, लेकिन वो फेवर भी कर रहा है ना एलिमेंटल रिएक्शन को, और उसमें लिखा भी हुआ उसकी किट में कि तुम उन्हीं के साथ इस्तेमाल करना हमेशा, इसलिए अच्छा है। Let the show begin. No touching. इतना कम क्यों मार रही है कान्यू इनकी? 2000 दिया है अटैक, 57 to 120 दिया है विथ 135 एनर्जी रिचार्ज के साथ। वेपन एमोश को दिया है प्लस ब्लिजर्ड स्लेयर दिया है। ये बड़ा कम मार रही है बे, क्या दिक्कत है भाई? Ready, steady, go! Cool it. This fight will be frozen in time. Born of ice and frost, this is long overdue. बड़ा कम मार रही है, 15,000 मार रही है, 25,000 तो मेरी ही मारती है। देखो बेसिकली बिकॉज आई डोंट गेट हिम आई एम गोइंग टू सिट टॉक अबाउट हिम ऑब्वियसली ड्रैको। नेक्स्ट गारंटीड धीरज। आई थिंक यू विल गेट एनफ, आई थिंक 11 days लेफ्ट ओनली। मैं छोड़ चुका भाई, मैं संन्यास ले लिया है, मैं सच बता रहा हूँ आरिफ साहब, हो गया मेरा। और झेला नहीं जाता 50-50 लॉसेस, तो अब मैं हो गया मेरा खत्म आरिफ साहब। ए इन्होंने ये क्या है भाई, कावे की तो इज्जत ही नहीं है भाई, कावे के साथ सिर्फ सिंगशो दिया है इस्तेमाल करने के लिए हमें। ये क्या है ये, मतलब क्या फिजिकल कावे चलाऊंगा मैं इनके लिए? मतलब करना क्या चाहते हैं ये लोग? मतलब मजाक चल रहा है क्या? कावे कावे के साथ टीम तो देते, कुछ तो देते, मतलब कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। एटलीस्ट कोले ही दे देते। देखो मम्मी कैफ का भी हमको मिल जाती हर साहब, लेकिन जो फ्रैगर ने कर्ज लगाया ना उसकी वजह से नहीं खेलेंगे हम, क्योंकि हमें पता है सारी 50-50 लूज करनी है। Rain outlines your fate. Know my sword. Sight clear. 34K का पड़ा है। Feast your eyes. What if I switch to this and go back to Kave? Nope. Alt is gone now. Alt is gone now. Come at me. Literally alt is gone. Rain outlines your fate. Know my sword. Witness the power. Watch and learn. Sight clear. एक सेकंड में तो मेरे को हीलिंग रिसीव ही नहीं हुई, ब्लूम फट रहे थे, तो ये क्या मजा आ गया? मतलब मेरे को हीलिंग ही रिसीव नहीं हुई है एक भी बार ब्लूम फटने में।
लेट मी सी। अच्छा 193 का हील कर रहा है वो। हील बहुत इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ब्लूम डैमेज के सामने हील तो बड़ी इनसिग्निफिकेंट है। और बोल रहे थे क्या कहते हैं ब्लूम डैमेज खाता नहीं है बंदा, लेकिन ये तो ब्लूम डैमेज भी खा रहा है कावे, तो कुछ ज्यादा ही इनसिग्निफिकेंट है कावे तो ये। second reason is so good, I believe I can't believe it's the same game lol। फर्क नहीं पड़ता धीरज, छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए। You will love the second one, I can guarantee। ब्लूम डैमेज खाता है नहीं मेरे को, मैं इन्होंने लिखा था कि वो क्या कहते कावे, जब वो ट्रेलर आया था उस टाइम ये बोला था इन्होंने कि कावे लाइक can't take bloom damage, instead he can heal from bloom damage। बट ब्लूम डैमेज वो खा रहा है लेकिन हील इतना कम कर रहा है कि फायदा ही नहीं है वो हील का। फिर traveler and Paimon by any chance? होयोवर्स ने प्रैंक कर दिया। हाँ होयोवर्स ने प्रैंक कर दिया एलिमेंटलिस्ट, गलत बात है यार ये तो। उसको 0.5 सेकंड में एक बार ही हील करता है ब्लूम, बाकी ब्लूम डैमेज करते हैं। देखना पड़ेगी फिर वीडियो कावे की एक्चुअली। मैं सोच रहा था अच्छा होगा कावे, ट्राई करने का सोच रहा था नीलू के साथ, लेकिन नीलू की ब्लूम का डैमेज इतना होता है कि मेरे को लग रहा है जितनी देर में हील करेगा उससे पहले कावे मर जाएगा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है अभी। And that's exactly why we're here. Is that so? Since you're both interested, would you mind if I gave you a brief So, the Academia Extravaganza is a grand event run by the Academia with a long and storied history. To be precise, it can be divided into the But जिस तरह से Wisdom डैमेज खा रहा है ना मुझे सच में लग रहा है, और हीलिंग स्पीड भी तेज नहीं है, वो एक ही टाइम हील कर रहा है। मुझे लग रहा है मर जाएगा वो ब्लूम की, नीलू ब्लूम से तो। The gala is held annually. During this लेकिन time, नीलू ब्लूम all पता है 6 इतने जल्दी Darshans will फटते set हैं ना up धीरज, booths throughout the तुमको city हील करने का and मौका ही नहीं host मिलेगा। guests to showcase the तुमको most पता है नीलू fascinating ब्लूम aspects पता of है their school, and thus increase their रेजिस्टेंट वाले कैरेक्टर पे भी, लाइक तुम्हारे याओ को ले लो या तुम्हारे काव्य को ले लो, उन पे ना स्टिल वो 12-12 हजार के या 13-13 हजार के डैमेज करेंगे ब्लूम। अब उसमें से वो 1500 हील भी करता है एक ब्लूम के लिए, तो जो 4 ब्लूम फट रहे हैं उसके 4 मल्टीप्लाइड बाय 1200 कर, और उसमें फिर 1500 माइनस कर ले। अब सोच कैरेक्टर कितना डैमेज खा रहा है तेरा वहां ऑन फील्ड विदाउट हीलर, सोच कितना डैमेज खाएगा। On the other hand, ऐसे हील का क्या championship is फायदा फिर held धीरज? once every 4 years. Each Darshan will send a representative to vie for the position of Grand Champion. नहीं रे, मतलब मैं बोल रहा हूँ देख शशि, नॉर्मल ब्लूम और नीलू ब्लूम में फर्क होता है। नीलू ब्लूम सुपर ब्लूम करता है, नॉर्मल ब्लूम ब्लूम होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो खरोच टाइप से होती है। नीलू ब्लूम ना प्रॉपर डैमेज देके जाती है, ग्रेनेड की तरह फटते हैं एंड बूम बाम होते रहते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हेलो जोकर, वेलकम टू द स्ट्रीम। This year, the gala is being held alongside the championship. देखना So the mood in पड़ेगा the city is, धीरज, as they रुको say, ट्राई करके देखना at an पड़ेगा। unprecedented fever pitch. Got it. You're most welcome. Huh? Well, Lesser Lord Kusanali and the sages as such, I've heard that the two of you are famous Remember across the way both you the make a rainforest family is and not a desert. family friendly. With your participation, especially in the Inter-Darshan Championship, more people will definitely come to appreciate the festival. Actually that's true हरीसव, ऐसा तो सोचा ही नहीं कभी मैंने। ये सुमेर से तू बोर हो गया हूँ एकदम। नहीं रे, इवेंट आते रहते ना तो मजा आ रहा है। अभी कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन इवेंट है, मैंने पूरा वेट किया खुलने का। अभी इवेंट पूरा खुल चुका है ना, तो वी कैन कंप्लीट स्टोरी इन वन गो। समझ में आया? एलिमेंटलिस्ट बाकी मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। बाइजो का स्टोरी क्वेस्ट है वो नहीं कर रहा मैं, सब नहीं तो खत्म हो गया तो मैं करूंगा क्या? फिर टीसीजे खेलते बैठूंगा क्या? यो मीम किड, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये इवेंट स्किप करने लायक है या एंजॉय करने लायक? पता नहीं, देखना पड़ेगा धीरज, मुझे क्या पता। अभी तो अच्छा लग रहा है,
अभी तो ये बकवास कर रहा है, देखना पड़ेगा। ब्रो मैंने आज स्टार्ट करना है ये गेम। एनी टिप्स? एनी टिप्स? जस्ट एंजॉय द गेम जोकर एंड डोंट यूज द फ्रेजाइल रेजिन। फ्रेजाइल रेजिन करके कुछ आएगा लिख के, वो यूज मत करना यार 45 तक। बाकी गेम में तुमको जो करना हो करो जोकर, एंजॉय करो गेम अपने हिसाब से जोकर। पहचाना? हाँ मीम किड पहचाना मैं तुमको। कल कुछ उस दिन कुछ अलग सा नाम रख के आए थे तुम। इस इवेंट में एक साइड स्टोरी है बट खास लोर नहीं है। फिर कमीशन मिशन की 20 मिनट की स्ट्रीम डेली और गुड बाय। नहीं नहीं टीसीजी भाई, टीसीजी बोर हो जाता है भाई, खेलने का मन नहीं कर रहा, तभी तो मैं टीसीजी प्रोसीड नहीं किया। इनाजुमा में चालू करना है, इनाजुमा से चालू ही नहीं किया मैंने, बोर हो गया मैं टीसीजी खेलते खेलते। मन ही नहीं कर रहा। Or do you mean you want us to join a darshan? But then we would have to उस deal दिन with कुछ the अजीब सा exams नाम रख and के आए थे तुम essays मीम and किड। stuff like that. Enjoy the game, use all primo on blue pulls. No need to worry. There's no pressure. और Just जोकर follow तुमको each match and enjoy हमारे the अलावा कोई festival. सलाह देना तो बिल्कुल Aside मत from that, सुनना, we'll also मना prepare कर some देना उनकी सलाह compensation को। for your मैं efforts. बता रहा We won't have you हूँ, working तुम्हारे for साथ free. कुछ गलत हो गया तो फिर रोना मत, ठीक है? किसी और की सलाह को मत मानना जोकर। तुमको पता नहीं है कितने यहाँ पे चुड़ैल लोग हैं, कुछ भी लोगों को कुछ भी करा देते हैं, मतलब घाटा कराना का ही सोचते हैं लोग। मेरे से सिर्फ एडवाइस लेना है, बाकी किसी से मत लेना। मेरे ये वन एंड ओनली वन आइडिया, बाकी मैं डिस्कॉर्ड पे आया था वीसी में ओपी नाम से। अरे हाँ याद आया, हाँ तो मैं डिस्कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं मिक्स कर दिया मीम किड, हो सकता है। हाँ हाँ याद आया। धीरज एक्टिवेटिंग ब्रोज विलेन आर्क। रिवेंज आर्क आएगी फिर, पता है धीरज? विलेन आर्क नहीं, रिवेंज आर्क आएगी फिर। That kind of sounds like a sweet deal. What do you think? टीसीजी में स्टार रेल जैसा एनिमेशन आ जाए तो मजा आ जाए, है ना? टीसीजी में स्टार रेल जैसा एनिमेशन, लेकिन एनिमेटेड कार्ड चाहिए होते हैं उसके लिए एलिमेंटलिस्ट आई थिंक। हाँ ड्रैको AR69 पे है, उनसे टिप्स लो यार, ड्रैको बहुत अच्छी टिप्स देते हैं AR69 वालों को। तुम शशि से ही पूछ सकते हो, शशि भी AR69 पे है, वो भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। गुड नाइट मीम किड, you will make some Dheeraj eventually, you know. Yes, 2 others in fact. Their responsibilities will be somewhat different from yours. So, how about it? Would you... Wow, having fun. The main event venue is at the outskirts of the Citadel of Regzar, and the organizer you're looking for is Karina. Tell her the championship is going to begin soon. I wish you... Alrighty, here we go. Let's see. एक्ट 1 चालू हुआ। आई थिंक इसमें 5 एक्ट है ना टोटल इस इवेंट में। आई थिंक 5 हैं इसमें पार्ट्स। नो यू कैन इनवाइट धीरज दो ड्रैको इफ यू वांट। धीरज इज रियली गुड इन दैट, यू नो। यू कैन इनवाइट धीरज, he can give you the experience of your lifetime. Welcome, one and all, to the Academia Extravaganza. वाह धीरज वाह। Now then, allow me to reveal the prizes for this iteration of the Interdarshan fabulous monetary rewards. और भी लोग हैं चैट में, research उनको भी बुला funds, सकते हो a धीरज limited ड्रैको। edition Genius Invocation TCG card. She should be Karina, right? Looks like she's in the middle of something. The Diadem of Knowledge. What a perfect work of art. What is diadem of knowledge? ये क्या होता है? Every time I see it, I feel like I'm losing myself in its beauty. The one who proves fit to wear it must be a rare genius indeed. अपनी आईडी में कुछ है ही नहीं करने को, तो मेरी आईडी ले लेना, उधर सब कुछ करने को मिल जाएगा। नहीं हम चैरिटी वर्क नहीं करते हैं एलिमेंटलिस्ट, कभी कभी मन करता तो कर देते हैं चैरिटी वर्क, बाकी ऐसे चैरिटी वर्क नहीं चलता है यहाँ। Bro, after bird level increase, the enemy become more tanky. It's painful at first. भाई तुमको पता नहीं है, होयोवर्स के लिए डिफिकल्ट एनिमीज आर बेसिकली टैंकी एनिमीज। उनको फर्क नहीं पड़ता डैमेज कैसा है एनिमीज का, टैंकी एनिमी होना चाहिए तो ही डिफिकल्ट है।
वो दिखा देंगे डायलम ऑफ नॉलेज अभी। I believe that most of you have already seen the Diadem of Knowledge or have heard tales about it. ये इसका ये क्या बैज लगा है क्या उधर पे? क्या ये रिप्रेजेंटेटिव का बैज है क्या ये करीना का? साइड में लगा है इसके कपड़ों पे। 20 years ago, a अच्छा researcher ये named क्राउन Shujha bought it for है। a large sum of mora before donating it to the academia. अच्छा ये क्राउन है। ये पता है उसके जैसा नहीं लग रहा है, क्या कहते हैं नहीडा का जो पॉड होता है जहाँ पे नहीडा सोती है, उसके आसपास का एरिया ऐसे नहीं ऐसे ही दिखता है बिल्कुल एग्जैक्टली। The generous championship prizes are also sourced from his sponsorship. Before we begin, allow me to express our gratitude to this researcher. who ये क्या हो cannot रहा be with है? us right now. इसको क्या हो रहा है? ट्रैवलर को क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? इसका ये क्या ट्रैवलर हमारा रोबोट है क्या? हरता का ग्लिचेस आने लगेगा इस हमारे रोबोट में लग रहा है। Things can only get worse. ये क्या हमारे गाइस रोबोट में प्रॉब्लम आ गई गाइस, कोई फिक्स कर दो आके। Things can only go from bad to worse. What is this place? Human nature begets conflict, and conflict begets ruin. From the beginning, the seeds of wickedness have been. इन्होंने अभी अभी जो नीचे से व्यू दिखाया ना उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मूछ नकली है। अभी अगर हमारा ट्रैवलर खींच देना मूछ तो निकल आएगी ये, सच बता रहा हूँ मैं। नीचे से ऐसे ही दिख रहा है, मूछ मतलब निकलने की हालत में है ऐसा लग रहा है देख के। नीचे से व्यू दिया था जो इन्होंने। Hey, stop spacing out! साया है क्या ये? साया है क्या ये? मतलब जोकर अमिताभ बच्चन फ्रॉम भूतनाथ। I'm नहीं नहीं uncalled out to नहीं, you, but you didn't इससे अच्छा ही दिखता था अमिताभ बच्चन। ऐसा Okay. बेइज्जती नहीं करते हैं धीरज Just stand चैट wait में। without telling Paimon. Did you stay up late without telling Paimon? I All was. right. I'm sure we're all more than ready for the championship to begin. इस क्वेस्ट में भागते हैं बहुत, फुल एक्सरसाइज हो जाएगी। Now कट then, सीन में ही भागे ज्यादा let's अच्छा invite है। our 6 Darshan Elementalist. representatives to the stage. Our contestants are representing Amorta, Tainari, बायोलॉजी अमोर्ता, टाइनरी। टिग्नारी होता है ना टाइनरी बोला इन्होंने। representing Spontamod, Sino, एलिमेंटलिज्म साइनो। अच्छा आप समझ में आया, तेरा एलिमेंटलिस्ट नाम कहाँ से आया है? एलिमेंटलिज्म से आया है तेरा। और ये लोग पता है कट सीन ऐसे दिखा रहे हैं इधर इस एंगल से उस एंगल से, भाई ऐसा लग रहा है सास बहू का सीरियल देख रहा हूँ मैं, या ऐसा लग रहा है किसी रेसलर का इंट्रोडक्शन चल रहा है और कैमरा वाला इधर से दे उधर से कैमरा एंगल्स ले लेके दिखा रहा है हमको। representing Ratawahist, Layla, ओके जोकर। इल्यूमिनेटिज्म। representing Haravatat, Farazan, मैंने नेम जी चैट जीपीटी से उठाया है। अच्छा चैट जीपीटी से उठाया, लगता है तेरी बातें सुन ली है उन्होंने। सेमियोटिक्स, ये क्या होता है सेमियोटिक्स? सेमियोटिक्स क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूँ मैं वर्ड। representing Kasharawar, Kave, टेक्नोलॉजी। एक सेकेंड, ही इज एन आर्किटेक्ट। ये कावे के नीचे टेक्नोलॉजी क्यों लिख के आ रहा है? आई थॉट ही इज एन आर्किटेक्ट। and for Vahumana, huh? Is Vahumana's representative not here yet? These introductions are pointless. Let's just get this over with. ससीबा का आ गया। Wait a sec. सेमियोटिक्स को एंशिएंट रूइंस को रिसर्च करते हैं, लेकिन सेमियोटिक्स का एक्चुअल इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है ससी? ये क्वेस्ट पीओवी है कि यूनिवर्स यूज जीपीटी सिंबल्स रिलेटेड रिसर्च पर्पस। सेमियोटिक्स बेसिकली एंशिएंट रूइन एंड राइटिंग्स को रिसर्च करते हैं। अच्छा। Finally, our final contestant is Vahumana's representative. हेड गाय। ये क्या है? इन्होंने हमारा नाम नहीं लिया भाई ससीबा का वाला, मतलब इन्होंने हेड गाय क्यों बोला भाई इसको? मतलब नाम था उसका।
एंटियोलॉजी ये क्या होता है? एटियोलॉजी क्या होता है अभी? ओके Oh, ओके so जोकर। that's Hat Guy. I think I've seen him before. You know who he is? I've heard that he's a researcher from a different country who nominally belongs to Vahumana. Word is that he's written a lot of political analyses. His manner of speech hasn't made him popular amongst most other Vahumana researchers, but his comings and goings are quite irregular, so he doesn't interact with others much. Aside from his more controversial aspects, his perspectives are considered quite incisive. इसका नेम हेड गाय ही रखना है था तो हमसे बेकार में क्यों पूछा? हाँ मतलब इसका नाम हेड गाय ही रखना था तो हमसे क्यों पूछा भाई नाम इसका? मतलब ये भी सही बात है। पैथोजन स्टडी एंड स्टफ। ओके Vahumana has seen a dearth of new talent lately, and some of its existing ones are not currently at the academia, so I suspect he might have been their only option. It's just kind of weird. He doesn't seem like the kind of guy who'd participate in competitions like this. आई एम one. क्वाइट पजल्ड टू। Now that we have our 6 contestants, the championship will इथियोलॉजी soon बेसिकली begin. मिस्टेक कार्ड्स वाले हैं। मिस्टिक आर्ट स्टडी होती है क्या मिस्टिक आर्ट्स की? वो तो फिर विजर्ड टाइप हो जाएगा ना, मतलब तुम्हारा स्टडी फील्ड होगी ना इटियोलॉजी तो कुछ। यू नो गाइज आई नो अ कपल आफ्टर सो मेनी शिट हैपेंड दे। Who will triumph this time मत पूछना around? गाइज रैको से। Hold on to your hats, because we're all on this ride together. ओ ये देखा तुमने? तितलियां उड़ाई इन्होंने, तितलियां पकड़ पकड़ के लाए थे एक एक और उसके अंदर बंद करके रखी थी। We really do know a lot of the contestants. मेरा सब्जेक्ट है इटियोलॉजी। Oh, right. We're guest commentators, aren't we? So, Finn, let's go ask them when we go say hi. ये तीन तीन के ग्रुप में खड़े हैं, वो अकेला होगा फिर पक्के से, वो अकेला कहीं खड़ा होगा साइड में। एक सेकेंड, डू आई सी ट्रेजर ऑर्डर ओवर देयर? साइनो कहाँ पे है? साइनो दिख ही नहीं रहा। बेसिकली स्टडी ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ डिसीज, देयर फैक्टर्स एंड अर्ली सिम्टम्स। Hey, Tainari. Okay. We came here to check out this extravaganza event, and then they invited us to be guest commentators. बट उन्होंने बोला वो पॉलिटिकल रिपोर्ट्स वगैरह लिखता है, which जो कि एक्चुअली रिलेट नहीं करता है इससे, इटियोलॉजी से। Is that so? I heard that there would be guest commentators recording the proceedings with cameras, but I didn't. It's a pleasant surprise that you're visiting Sumeru again while I'm still on leave. When everything comes together perfectly like this, I call it the biryani factor. I am talking about my... Because it's always rice to meet stew again. So, Tainari, you're representing Amurta, and Sino is representing Spantamad, but haven't you both already graduated? Can alumni also take... I had wondered the same thing. When I was told the news, I was actually more shocked. I later found out that anyone who has been a part of a particular darshan has the right to participate. So that's the rule, huh? पढ़ा ही नहीं मेरी चैट ही नहीं पढ़ा तेरी ट्रैक को, मैंने पढ़ा ही नहीं तेरी चैट। इन सब में कौन सा कहाँ है? इन सब के नोज कहाँ है ना नोज? ध्यान से देखो, वो शैडो ऐसी बनाई इन्होंने कि दिख नहीं रहा है नोज। ध्यान से देखो अभी इस पिक्चर को, तुमको नोज दिखेगी। ध्यान से देखो, जूम करके देखो जोकर, ऐसे ऐसे फुल 100% जूम करके देखो, तुमको अभी नोज दिखेगी। There are some restrictions though. For example, पहले मेरे को भी sages लगता था cannot नोज कहाँ है, participate. बाद में Any ध्यान से given देखा तब person समझ can में कि only है एक्चुअली participate इनका in one नोज। instance वो at the एक्चुअली कैमरा championship, एंगल ऐसा है and और so इन्होंने on. बनाया ऐसा कैरेक्टर कि नोज समझ में नहीं आती कि नोज है एक्चुअली कैरेक्टर्स की। That's right. Also, there are two methods by which the darshan representatives are chosen. ये इवेंट किसके बारे One में is है? self-nomination, I think and the other is to be it has recommended something by to do over with half the of one's old darshan. researcher
एंड जो हमको दिखा था, जो जिसकी आत्मा हमको दिखी थी, एंड आई थिंक इंटर दार्शान कंपटीशन रिलेटेड है ये स्टोरी, कुछ तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है अभी तक। You must have been a case of the latter, Tainari. I heard that quite a few. मेरे ख्याल से पता है साइनो एक्चुअली होंकाई स्टार रेल में ज़्यादा पिरो होगा जेंसन के कंपैरिजन में, एंड आई थिंक मोस्ट पीपल विल चूज साइनो एज एन इलेक्ट्रो डैमेज डीलर देयर। मेरे को ऐसा लगता है धीरज, वहाँ होंकाई स्टार रेल में ज़्यादा ओपी होगा साइनो, जेंसन में है नहीं जितना, उतना उससे ज़्यादा। Sometimes I wish I could clap a few of them over the head and tell them to spend that time on studying instead. Well, you can, but after some consideration, I realize this could be a good opportunity for me. Next month, we're having a public lecture on ecology at Gandharvaville. If I participate in this event, I might be able to utilize its popularity to promote the lecture. टीसीजी पे है वो पे साइनो। ड्रैको हम होंकाई स्टार रेल की बात कर रहे हैं, हम टीसीजी की बात नहीं कर रहे हैं। तुमको हमको समझ नहीं आया साइनो मिल कैसे गया, हम किसकी बात कर रहे थे वो समझ I'm में not नहीं that आया। concerned about becoming the champion. Unlike some. Yes, I'm using the last of my leave for this. When I heard that a limited edition Genius Invocation TCG card, this year's card is a rare one indeed. Wait, is it some kind of... No, it's a very common one. so... It's very cool. Paimon meant apart from being very cool. That is reason enough. I shall do my all to emerge victorious and add it to my deck. कोई सेम चीज नहीं है तेरे को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है, कुछ रिलेशन नहीं है उनके बीच में, पता है कुछ रिलेशन नहीं है। As someone who doesn't play. Fair enough. Alright, let's go for... Kaveh! Farzan! Layla! Huh? Oh, it's you. Why are you here? We're here as specially invited guest commentators. Our job is to record what happens during the competition. Is that so? In that case, I'll have to trouble you to catch the moment of my triumph on camera. Remember to shoot from behind at a lower angle. You know, to capture a seniors class. Don't get ahead of yourself now. देख रहे हो, Victory will देख रहे हो, सेड्यूस कर obviously रही be है mine. यहाँ पे फारजान। मैं सच बता रहा हूँ, फ्रैगर तो भाई फुल अलग अलग एंगल से, कैमरा एंगल से फोटो लिया होगा फारजान की। मुझे समझने दो, अब मैं डेली आऊँगा। जोकर खेलोगे ना तुम गेम, और जब फ्रेंड्स के साथ बैठ के खेलोगे या डिस्कॉर्ड में दूसरों के साथ बैठ के खेलोगे, तो तुमको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगी गेम, तो इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारा भी। नहीडा से सबके मन की बात भी पढ़ना बात करने के बाद। ओके ओके ससी। You're far too young to even consider challenging me. Kasharwar or Ratawahist, you're all children as far as I'm concerned. Actually, I was going to ask, how do you know me, Madam Farzan? Huh? You don't remember? I sometimes see you in the library at night. You even waved at me. What? I don't remember doing that at all. Huh. How strange. However, this is not the time for curiosity. I am Farozan, a household name in Haravatat. You are Layla from Ratawahist, I presume? Yes. Good. Then we are officially introduced. See? Simple as that. I like respectful ones, by the way. Would you like to join my research group? Madam Faruzan, I'm quite sure this counts as poaching. Let's dial things down. I know, but it's been tough getting people these days. And research funding has been लाइला hard का to भाई, secure. लाइला लग रहा है दारू पी के आई है। भाई तो जब क्लोजअप शॉट लेते हैं ना दूर से, मतलब तुम लैला को देखोगे ना बहुत अच्छी दिखेगी लैला, तुम जितना क्लोज जाते जाओगे ना कैमरा एंगल लेके, उतने डार्क सर्कल दिखेंगे तुमको लैला के। मतलब हद है, मतलब गजब ही डार्क सर्कल दिए हैं इन्होंने लैला को। But once I win this tournament, it'll be a different story.
200 yo Hatsune Miku. So you're just here to increase the amount of funding you're getting? Well, not just that. What? Are you curious about my reasons for participating? Well, I suppose that's to be expected. You are our guest. There's been an influx of newly enrolled students, and they'll be paying close attention to this competition. If I do win, I'm certain that there will be no lack of students knocking upon my... Moreover, research resources will be made available to the victor, so that will nix my funding issues. Therefore, my two juniors, I do apologize. I'll do my best as well. At least I don't plan to lose too badly. So, why are you पता है here, आपको Eva? हात्सुने मिको गूगल करो करेंसी होगी कोई धीरज मुझे क्या पता क्या I है don't know why, but a lot of people recommended me. I didn't sign up myself. I just woke up to find my name on the announcement board. कोई गेम है ये हात्सुने मिको कुछ बोल रहा मोबाइल गेम है कोई अच्छा 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 मोबाइल गेम के कैरेक्टर का नाम है हात्सुने मिको और बिल्कुल फारुजान जैसी दिखती है ये देखने में That sounds like what happened to Tainari. Him too? Oh, I'm really nervous. I've been... Stress not, young one. We must all experience failure to grow and mature. But Madame Farsan, I don't want to fail. Seriously? Everyone has such nice reasons for joining. Must I say? Yes, you do. We gotta record it. Well, you know, right? I want to buy some property. Oh, that's right. You want to move out of Alhaitham's. What? Alhaitham? What about him? This has nothing to do with him. Oh, right. Sorry. वो कावे भी लाइक एम्बैरेस्ड कि मैं अलहाइतम के साथ रहता है अलहाइतम के साथ सोता है एक ही बेड को शेयर करता है वेरी वेरी बहुत बहुत शर्म मारा है कावे बात सुन के ये बातें You want to use the grand prize to buy a place, right? ये बोल रहा कैसे रही है लैला कैसी रही है लैला कैसी लग रही है लैला अरे वो उसको क्या कहते हैं लाइक डिसीज टाइप से है कि रात में सो नहीं पाती थकान बहुत रहती है उसकी वजह से ऐसा है उसकी डार्क सर्कल्स हैं उसका अलग ही कैरेक्टर है लैला का थोड़ा तुम जब खेलोगे गेम तो समझ में आएगा जोकर पढ़ोगे लैला की स्टोरी तो या लैला की स्टोरी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा तुमको कि लैला के साथ प्रॉब्लम है एक्चुअली Once I do, the right to wear that diadem will be mine. In a way, That's not a bad reason at all. You have ambition, youngster. Although your chances with me here aren't great, I believe your father would be most proud if the diadem of knowledge were bestowed upon you. not that he'll have the chance to celebrate. For you to have experienced such a thing. It's all in the past now, and life goes on, doesn't it? Let's change topics. I don't want to bring the mood down. All right. Earlier, you said that you want to use the prize Mora to purchase a home. Where do you live now? Do you live alone? Well... I also heard you mention Alhaitham just a moment ago. Isn't he also from Haravatat? Are you two hiding something from me? No, of course not! Why would you think that? टीम्स हैं इसमें वो सारे मेन कैरेक्टर टीम लीडर हैं Hyman's definitely not involved either. नहीं We're पता gonna अभी go धीरज interview other contestants आई थिंक now. टीम्स Bye. नहीं है वो दारशान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल 6 दारशान हैं एकेडमिया में और 6 दारशान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 6 डिफरेंट कैरेक्टर गेम के एंड बस इसका बेस यही है धीरज लीडर नहीं है दे आर रिप्रेजेंटेटिव लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से हियर पहले देख लेते हैं It doesn't seem that Sumeru City has changed too much. I must get that limited edition card. नॉर्मल है ये तो ससी तो क्या बोल रहा था I see everything. I'll show them how fierce this competition can be. ओके With that prize money, I'll be able to move out of Alhaitham's place. टीम नहीं है जैसे कॉलेज में डिपार्टमेंट होते हैं वैसे दारसान होते हैं एकेडमिया में हाँ अभी 12 GB डाउनलोड हो गया है
चालू करो खेलना, तुमको समझ में आएगा, गेम सब बताएगा तुमको। और बाहर अगर जो लोर समझ में ना आए ना तो इंटरनेट पे सर्च करके लोर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी तुमको। लोर बता रहा हूँ धीरज, एक बार धीरज बोल रहा हूँ जोकर, पढ़ोगे ना एक बार लोर तो तुमको मज़ा आएगा एक्चुअली में। Do I really have what it takes to represent the Ratawa Histarshan? स्कारामुश को देखा, वाह मेरी मन की बात शशि भाई। You really think you can see through me? अच्छा तो ये एक सेकंड, ये नहीडा है क्या? ये जो क्या कहते हैं वॉन्डरर यहाँ पे आया हुआ है, ये वॉन्डरर के अंदर नहीडा की आत्मा है क्या ये? क्योंकि ये बोल रहा है कैन यू रियली सी थ्रू मी। Do you really think you can see through me? So Just call me Hat Guy. That's the name I use in Vahumana. that sounds like a nickname, not a real name. So I can't go by a simple or. Fine, suit yourself. All right then, Hat Guy. Why are you taking part in the Interdarshan Championship? We're specially invited guest commentators, so play nice and answer our questions. You could be Matra for all I care. So what if I don't answer you? What then? पाइमोन स्मग बनने की कोशिश कर रही थी इसके सामने, स्कारामुश के सामने, उसके मुंह पे वापस उसको रिप्लाई दे दिया उसने वॉन्डरर ने। I'll tell you this much. I have an agreement with someone not to reveal my motives. You're not plotting something in secret, are you? Well, it's hard to say. Why don't you take a guess? Ugh, Paimon's had it with you. Fine, be that way. Then we won't ask you why you're participating. Instead, why did you join Vahumana? You two sure like to poke your noses where they don't belong. If I don't say anything, are you going to annoy me to death? I heard that the Vahumana researcher named Akaba was researching the Tatarasuna incident. So I wrote a few essays to Nice, refute his Vats. points. Thank you so much for donating 20 rupees, Vats. कैसे Vats? 20 रुपए कहाँ से आ गए? मेंबरशिप नहीं लिए तुमने, 20 रुपए डोनेट कर दिए यार Vats. गलत बात है यार Vats. लेना चाहिए था मेंबरशिप, अच्छा रहता मेंबरशिप लेते सर। Big air conditioner for you, Shujha sir. Shout out. Thank you so much, सिद्धार्थ. I hope ठंडा करे ये तुम्हारा एयर कंडीशनर। लोल इससे नहीं पिटाई खाई है ट्रैवलर से, फिर भी ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा। हाँ डेली पिटाई खाता है, हर वीक पिटाई खाता है हम लोगों से, फिर भी इतना एटीट्यूड दिखाता है। Later, when I was bored, मेंबरशिप लो बे बात, I wrote ऐसा नहीं some काम चलता है। commentary on societal मेंबरशिप लो, issues in Inazuma. सुपर चैट से फायदा I नहीं didn't है, expect मेंबरशिप लो। Vahumana to consider me as one of them. Someone even invited me to a lecture or whatever. अरे एग्जाम का वेट मत करो, अभी लो बात से, एग्जाम From तो आते start to रहेंगे। finish, it was just the wishful thinking of idiots. A misunderstanding. But when Lesser Lord Kusanali heard about this, she went out of her way to get me registered in Vahumana. She used the name Hat Guy. Enough chit-chat. You're better off wasting your time with the other someone's about to get very unlucky. How is anyone supposed to relax with you around? We've got a... Looks like Karina's got a moment now. Let's go chat with her. Where is Corina? कहाँ है बे? मैप में दिखा रही थी, दिख नहीं रही है, कहाँ है? अरे 10 मई को खत्म, पे 2-3 दिन में लूँगा। ओके ओके। I've heard about you. I saw you two having quite the lively conversation, so I thought it would be best to wait. Are you two free right now? We were actually looking for you. Excellent. I hope तुम Please लोग को allow me to स्ट्रीम पे explain आवाज your आ रही job होगी गेम की responsibilities in गाइस, detail. क्योंकि मैंने कम कर रखी है। बट आई होप तुम लोग को आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना, मैं डायलॉग वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। First, please take these two things. The first item is a custom camera from the academia. Please use it to record the competition as it unfolds. The second is an event-specific locator that will flag all participants' locations. आ रही है ना, ठीक है It फिर। will also sound when one of them completes an objective. Wow, what a convenient little thing. Aside from you two, there are 2 other commentators. However, they will remain by the commentators area and will not be following the contestants in real time.
ओह नीलू और अलहायतम भी आए हैं इसमें तो। भाई इन्होंने ऐसा लग रहा है मुझे कि पूरे सुमेरु के सारे जो इतने कैरेक्टर थे ना सबको बुला लिया एक ही जगह पे। Speaking of which, you probably know them. Alhaitham and Nilu. Oh, it's them! We have to go over and say hi later. Well, don't let me keep you unless you have any questions for me. Have you seen the white-haired man around? Why do you ask? I saw someone like that on the stage earlier. Really? I didn't see any such person. Could I ask when you saw him? Strange. I was on stage the entire time and I didn't see any. Paimon didn't see anyone either. Perhaps you're mistaken. However, if you have any leads on that matter. Hey, अरे traveler. Paimon. Long time no see. मेरा इंट्यूएशन बिल्कुल सही था। ये देखो कैंडेस और डिया भी आ गए यहाँ पे। ओ भाई पूरी बारात बुला ली इन्होंने तो सुमेरु की। जितने लोग थे सुमेरु के सब बुला लिए एक जगह पे। अब सिर्फ बचे फोस्टर आने, जितने फोस्टर वाले कैरेक्टर थे ना सुमेरु के सबको एक जगह पे बुलाओ, चालू करो फिर पार्टी आर्टी जो थी। Dia, Candace, you two are here as well. Ah, so they're two friends of yours. In that case, I'll take my leave. ओरियो May you मीम all have a wonderful याद time आती है during the इनके आई कांट extravaganza. अनसी। अरे ऐसे बातें नहीं करते धीरज। The academia sent us both invitations, so Dia suggested that we come together. अरे ये पता है एक्चुअली में पता है अगर तुम ध्यान से देखो ना ये डिया और कैंडेस एक्चुअली में एक तुम्हारी क्या कहते हैं वेनिला वाली ओरियो है और एक तुम्हारी चॉकलेट वाली ओरियो है। वेनिला वाली ओरियो का एक्चुअली बाहर का क्रस्ट थोड़ा ब्लूइश होता है, चॉकलेट वाली ओरियो का क्रस्ट एक्चुअली में ब्लैक होता है। एक्चुअली में वैसे ही लग रहे हैं धीरज, पता है। The villagers were also encouraging me to पैकेट travel देखा है कभी outside the उनका village. ओरियो का? एक्चुअली में ऐसे दिखता है। I couldn't find it in myself to turn them down. यार वीपीएन लगाकर भी सुपर चैट नहीं हो रहा। कोई नहीं जोकर मत करो। यूट्यूब वो में भी तुम्हारे यहाँ ब्लॉक्ड है ना अभी पाकिस्तान में, तो नहीं होगा। जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है करना। मेंबरशिप ले पाओ तो ले लो, नहीं ले पाओगे तो कोई बात नहीं है, मत लो। इट्स ऑल फाइन। We're here now, so लिटरली no हैड द point वर्स्ट dwelling डे on that. एवर। क्यों Even बस though क्या this हो गया? extravaganza isn't a एग्जाम holiday बिगड़ा or या anything, किसी ने it's तेरे को still a रिजेक्ट big कर deal दिया here in बस मुंह Sumeru. पे? Merchants from all over will set up shop. There'll be tons of stuff to eat, use, and wear, more than you can count. I'm already set on helping you buy 2 new outfits. I mean, who wears the same thing at work and home anyway? I'm looking forward to it. Just being able to relax and wander the streets freely has already made my... So, traveler, Paimon, you... We'd love to, but we... Aw, that's a shame. Let's hang out together when you're free then. Sure. In that case, किसी Candace and को I'll head out first. पूछूंगा तो Good रिजेक्ट clothing and करेगा ना। fabrics are very much in demand. If you snooze, you lose. मैं लड़की Oh, से right. रिजेक्शन खाने की We बात should कर also रहा get हूँ। some बस accessories. लड़के से रिजेक्शन थोड़ी खाता है तू। क्या तू लड़कों को प्रपोज करता है तू? क्या बात जाके नई चीज मालूम चली यार बात तेरे बारे में। No need to rush. अरे जोकर, I think you we'll have a flattered better me. time if we take things slow. See you two later. Feel free... Paimon didn't think that Candace and Dia would come. Hanging out नहीं with them तूने sounds like बोला a है good time. तूने बोला है Still, किसी को let's get the पूछूंगा तो रिजेक्ट competition करेगा started ना। soon. Let's go over to where Alhaitham is and see what's किसी को going on. पूछूंगा लिखा है तूने स्पेसिफिक नहीं लिखा लड़की को, तूने बोला किसी को। तो आई कंसीडर्ड तूने दोनों जगह लाइन मारी है। बस वेरी डाउटफुल। सेम ऑन यू बस। दिमाग नहीं चल रहा है इसलिए करेगा, हो गया। अरे अब देखो यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है बस के द्वारा। देखो गाइस बहाने बनाए जा रहे हैं। अच्छा इसमें स्कोर बोर्ड भी है। वाह भाई इन्होंने स्कोर बोर्ड भी बना रखा है, ये भी सही है। सेम ऑन यू। क्यों आप है उसका इंटरेस्ट तो है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। शशि सबसे बड़ी बात ये है एक्सेप्ट कर ले तो हमको कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा वो।
मना कर रहा है। ओके ओके बस। अरे फ्रैगर ग्राइंडिंग कर रहा है उसमें होंका स्टाइल में, तुमको पता नहीं है? बिजी आदमी हो गया है आजकल। फ्रैगर भाव नहीं देता है जब से उसमें होंका स्टाइल में लक फटा है ना उसका फ्रैगर का, तब से बिजी आदमी हो गया, भाव नहीं देता आजकल किसी को। हम लोग छोटे लोग हो गए, पता है तुमको धीरज? I will now announce the rules for the first round of the competition. Please, during the opening ceremony, Academia staff released several cages of butterflies, and many of them are now fluttering within Sumeru's. Amongst these butterflies, 3 of them will be special swift flies. They have a different appearance, and also, your objective this round is to find a swift fly and bring it to me. 3 points will be awarded to the first participant to return, 2 to the second, and 1 point to the अरे कुछ third. काम कर रहा था, होंका थोड़ी खेल रहा। फ्रैगर तुम काम भी करते हो? क्या काम कर रहे थे फ्रैगर? That is all for the first round. Should you require clarification on anything, please ask any of the other staff. Oh, Haytham's all business all the time, huh? That said, how did he get picked to be a commentator? Paimon's kinda cute. Finding 3 specific butterflies in a place as large as Sumeru City sounds rather improbable. If these swift flies behave anything like regular butterflies... किसी ने भी लगता है सुना नहीं है स्विफ्ट फ्लाइज के बारे में। बटरफ्लाई जो बटरफ्लाइज का एक मतलब वेरिएंट है, ऐसा लग रहा है कि टिग्नारी मेरे को लग रहा था सबसे क्लोज है जिसको पता होगा बटरफ्लाइज के बारे में, बिकॉज ही लाइक एवरी सिंगल डे वो नेचर के क्लोज रहता है। इसको भी नहीं पता स्विफ्ट फ्लाइज के बारे में, किसको मिलेगा फिर ये? यार इस गेम में शादी होती है क्या? यहाँ तो कोई देता नहीं। नहीं नहीं शादी नहीं हो सकती जोकर। तुम्हारे ख्वाब बड़े बड़े हैं बहुत जोकर, बहुत ज़्यादा ख्वाब बड़े हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जरूरत से ज़्यादा ही ख्वाब बड़े हैं तुम्हारे। I'm off. It will take some time to search every corner of Sumeru. Huh? You're going just like that? A champion walks the road to victory. My dear Kasharawar Jr., I have a plan. How about some cooperation between you and me? Cooperation? Looks like everyone's got their own plans for this, Tuffy. We're supposed to go on stage next, right? Huh? Wait a minute. सबसे तेज तो पता है मेरे को लगता है वॉन्डरर ही ढूंढेगा। Observing the other contestants just like we are. मेरे को लगता है सबसे जल्दी तो पता है ये वॉन्डरर ही क्या कहते हैं पकड़ के लाएगा बटरफ्लाइज को। क्यों? क्योंकि बंदा हेलीकॉप्टर लगाएगा, फिर हेलीकॉप्टर करते हुए पूरे सुमेरु सिटी में उड़ता फिरेगा कतई तेजी से, वुई वुई करते हुए घूमेगा, पता है? We were right not to let our guard down. Do you remember those things we made? Huh? It's time for them to shine. It looks like Faruzan and Kaveh have some secret plan. Oh, hello there. Madam Faruzan and I are discussing Shh! Hush now. The walls have ears around here. We should keep it a secret for now. But come now, let's go. Before... All right, there's no time to lose. We're off to make... ये कुछ डेवलप कर रहे हैं। लैला तो ऐसी कहीं निकल ली। This is basically what I'll need. Do you think you'll have any अरे difficulties? कोले भी यहाँ आ गई, बस इस कोले की कमी थी यहाँ पे, कोले भी आ गई यहाँ पे। तो भाई ये कतई तेज है गेम वाले भाई, सबको बुला लिया यहाँ लोकेशन पे। most of the reagents with me, and I can buy the rest. Kaveh, you're here too. हाय अमाते, वेलकम टू द स्ट्रीम। गाइस लाइक कर दो गाइस स्ट्रीम को, जितने बंदे स्ट्रीम पे नहीं हुए गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज गाइस आफ्टर 20 लाइक्स विल डू द अकाउंट रिव्यू, सो 20 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कराना। My अगर 10 hypothesis लाइक is कंप्लीट हो that the चुके हैं तो swift वी कैन fly's गो फॉर 20 morphological लाइक्स नाउ। variations won't significantly affect their fundamental nature. Of course, I could be wrong. Details will have to wait. यू लाइक माई पिक? दिख ही नहीं रही है अमाते मुझे तो पिक यहाँ पे। सच बोलो मुझे पिक ही नहीं दिख रही है, मोबाइल में पढ़ रहा हूँ ना क्योंकि चैट, तो मुझे पिक ही नहीं दिख रही तुम्हारी। Hey, Layla. You? Yeah, I have no idea what I should do. What color are these swift flies? Do they have special... Oh, I can't even figure out these basic questions. Aren't people who research the stars supposed to have some extraordinary abilities? Why not use astrology to solve it? Oh,
you're another contestant. Hat guy, was it? Is it that you can't use astrology during the day? Guess that skill's less useful than I thought. No, it's not like that. If it's daytime, all I need is an astrolabe. So, why don't you do that then? Mona Magistus, the astrologist, said that those who constantly use astrology to obtain things that shouldn't be theirs will eventually lose the blessing from the stars. Wait, Mona Magistus the astrologist. Wait, लैला मोना से कब मिली बे? और वेट, मोना सुमेरु की है एक्चुअली में? ये कब हुआ? लैला इज लिटरली टॉकिंग अबाउट मोना राइट नाउ. मोना से मिली कब? पहले तो क्वेश्चन ये है लैला. दूसरा, मोना अगर मिली है तो इसका मतलब है मोना सुमेरु से है. इट सीम्स. It's just something I read in an academic publication. I really love to read मोना ऐसे पब्लिश करती है? What? You're overthinking it. Power is just a tool. It just seems to me that you don't have the resolve to win this. Well, suit yourself. Wallow in your immature ideals if you like. Hey! Seriously? Just walking off after saying a bunch of... Did I say something wrong just now? It was just difference between perspective, that's all. Thank you so much. I've made up my mind not to use astrology for this. I think, to be honest, I've always been pretty good at observation, and if I'm fortunate, Lord Sino seems to have found a swiftfly. Come on, let's go check it out. Really? Where? The butterfly flew up high, and he's chasing it now. Oh, no time to lose. As expected of Sino. Actually, shouldn't हाँ, you जवाब two दे go दिया have लैला a ने look as एकदम से. well? The वही moment तो. when he catches the butterfly will likely be one worth recording after all. Because we still don't know कि मोना कहाँ से है, मोना का होम टाउन कहाँ पे है. We still don't know yet. तो मुझे लगा एक्चुअली मोना सुमेरु से ही होगी. But actually में मोना सुमेरु से नहीं है. Which means I guess upcoming area Fontaine वगैरह से है मोना. Alright, in that case, let's go see Sino. कहाँ पे है साइनो भाई? ये मैप में लोकेशन दिखा रहा है कैरेक्टर की. ये लाइव लोकेशन चल रही है क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स की? भाई यहाँ पे तो टेलीपोर्टर भी नहीं दिख रहा है. पूरा टेलीपोर्टर छेक लिया इन्होंने तो. टेलीपोर्टर था लिटरली यहाँ पे, इसके नीचे मेरे को टेलीपोर्टर ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे. वेट, ये लाइव लोकेशन है क्या इनकी? नहीं, लाइव लोकेशन टाइप लग नहीं रहा है. टेलीपोर्टर ही नहीं है वहां पे. टेलीपोर्टर था उसके ऊपर. Let me find. यार टेलीपोर्टर था यार, ऊपर चढ़ना पड़ेगा पूरा. कहाँ से चढ़ते थे ऊपर? ये क्या है बे? हाइतम मिलेनियर सेल्फ प्रोक्लेम्ड. ओह माय गॉड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिलेनियर है ये बंदा. मोनालिसा को पता है कि कहाँ से है वो. मोना को तो पता ही होगा कि मोना कहाँ से है. लीजा को कैसे पता होगा कि मोना कहाँ से है? नहीं पता हो सकता है, बट वो अभी रिवील थोड़ी करेंगे वो लोग कहीं बात में कि कहाँ से है मोना. एक्चुअली में उसकी ड्रेस से लगता है फॉन्टेन से है मोना, मेरे को मोस्टली लगता है. हाँ, मेरे को फूड खाना था वो वाला स्पीड वाला, क्योंकि बहुत भगाने वाले हैं ये लोग. तो इस टाइम है ना, फूड खा लेते हैं जल्दी ताकि स्प्रिंटिंग थोड़ा कर पाए हम. बाय द वे, वेलकम टू द स्ट्रीम सुकुना, कैसे हो? एक्चुअली में तेरी बात सही है, पता है लीजा पता है क्लोज होगी मोना से थोड़ा, क्योंकि दोनों विच हैं.
मैंने बिच नहीं बोला, मैंने बिच बोला, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंड आई थिंक यू नो वो डिस्कस करते होंगे, दोनों ज्ञानी आदमी है, दोनों डिस्कशन तो करते ही होंगे, तो आई थिंक पता होगा। Wait, is that a swift fly? Stay put. Don't move. He caught it! Huh? Sino? This isn't what I'm looking for. Finally, I made it. I heard that you caught a swiftfly, Sino. Hold on. Isn't this the mechanical bait that I released earlier? Why would you catch that instead of a swiftfly? Wait a minute. If we consider this from a different angle, isn't it a good thing that the bait you made was convincing enough to fool even Sino? That's right. During a previous interior design project, I felt that the artificial flowers on a wall were a little bland, so I decided on placing a few moving mechanical butterflies to add some. In order to make them both small and nimble, I consulted with Madame Faruzan. Not long ago, the two of us took all those mechanical butterflies and Why would you do that? Need you even ask? Young people these days really do need to get out. Have you never played that game where you place strips of paper on a bamboo pole and wave it across a field of flowers to attract a whole kaleidoscope of butterflies? No, I have. Wait. So you're trying. That's right. The butterflies within the city will mistake our mechanical bait for one of their own and follow them around. As long as we keep releasing and retrieving our bait, we can capture all the आलू के butterflies चालू within the बेटे city. कहाँ गए What comes थे? afterward is just a matter of separating the swift flies from the others. Huh. Guess that's one way to do it. Do not मुझे याद नहीं आ underestimate रही the आगे wisdom की of लाइन, the पता elders. धीरज? I had already सुनी thought सुनी of लग this रही but the है। moment the round. Of course, we also owe much to this fine junior of mine here for making such lifelike butterflies. It seems that Kasharawar has not. Well, I just stuck to. No need to be so polite. Once we capture all these butterflies, we shall split the points for this round. Look, one of them is returning now. Huh? ये भी मैकेनिकल फ्लाइज हैं। Are my eyes deceiving me? Why don't I see any butterflies? That's because there are none. Seems like you're. Looks like the match continues. Huh. Come, let's search in the direction the bait returned from. We'll go have a look. 2 पीस सेट वाले बिल्ड एंड 4 पीस सेट वाले बिल्ड में कितना डिफरेंस होता है आयातों के? मेरे पास आयात तो है नहीं। वेट, ये लोग लाइव लोकेशन दिखा रहे हैं मुझे इनकी। नानी लिटरली लाइव लोकेशन दिखा रहे हैं वो लोग, देख मूव कर रहे हैं वो लोग। नॉट श्योर कितना डिफरेंस होता है, बट वो मेरे को लगता है आयातों के केस में भी क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो एक स्पेसिफिक वाला तुम्हारा होता नहीं है, वो जो एक स्पेसिफिक वाला होता है तुम्हारा सेट जिसपे तुम्हारा पिंग का बहुत रिलेशन रहता है, उस पे तो डिफरेंस आएगा ही ऑब्वियसली डैमेज का, क्योंकि उस पे एक्चुअली बोनस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर उसको कंसिडर ना करें उस सेट को हम, एज इन लाइक वो यूज़ नहीं कर रहा कोई, और लाइक हार्ट ऑफ डेथ वगैरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या टू पीस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बीच में मेरे ख्याल से ज़्यादा 15 या 20% डैमेज का डिफरेंस आता होगा, ज़्यादा नहीं आता होगा, क्योंकि मेनली बिल्ड पे डिपेंड होता है ना आयातों का क्रिट रेट किट डैमेज पे, प्लस कितना तुम स्पीड बूस्ट दे पा रहे हो कैरेक्टर से। स्पीड बूस्ट अगर सपोर्ट मान लें, और मान लें कि आर्टिफैक्ट सेट स्पीड नहीं दे रहा है दोनों सेट के केस में, तो फिर वो उतना ही आएगा, 15 से 20% ही आएगा। Faruzan, Kave, why did you two stop? बंदर की कोठरी में सो रहे थे। Ah. So it was the Morta boy. Tainari! Fascinating, isn't it? The butterflies have all congregated here due to a special incense that I used. I infused it with 3 different types of honey, and the butterflies, following the fragrance, have gathered around me. Butterflies must have really sharp nose. Wait, do they even have? They do not, in fact, and their vision isn't stellar either. However, they can use their antennae to distinguish between scents, and their olfactory senses are generally quite advanced, allowing them to detect floral fragrances from great distances. Oh, so that's how it is. क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी तुम्हारी पता है क्रिटिट के डैमेज पे आती है ना सुकुना, और कितना अटैक है तुम्हारे उस पे आयातों पे, उस पे डिपेंड करता है तुम्हारा।
तो अगर तुम्हारा 2 पीस सेट में भी सेम क्रिट रेट क्रिट डैमेज विथ अटैक परसेंटेज होगा तो फिर 15 से 20% ही डैमेज डिफरेंस आएगा 4 पीस के डिफरेंस से। अगर ये तीनों फैक्टर को भी सेम मान ले सभी सेट में तो इतने ही डिफरेंस आएगा 15 से 20% का, क्योंकि पैसिव की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा आ सकता है डैमेज। That's normal. Raising butterflies isn't difficult. हाँ, but there are ज्ञानी many आदमी things you should take note of. टिकनारी लेक्चर देना चालू कर दिया बंदे ने, उसको फर्क नहीं पड़ता है कंपटीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ही वाज लाइक कि मेरे को ज्ञान देना है, मतलब ज्ञान देना है, रोड के बीच में खड़े होकर ज्ञान दे रहा है टिकनारी। Appropriate temperature, sufficient air, and a spacious environment are examples of such considerations. You must also ensure that the food you've chosen suits their palate. Most importantly, you must curb your curiosity and avoid disturbing them while they rest. Otherwise, they may... Sorry. I liked to poke at its wings at the time. Humans tend to rear many creatures due to their aesthetic value, but not caring for living beings is hard work. Impulse alone is insufficient. Ilahi. Some prerequisite knowledge This is always stupid game required. again, yes Ilahi. What can I do? We haven't played this stupid game for like a week ना, तो खेलना पड़ रहा है अभी। You sure do know. I have a question too. I bought a scarab not long ago and it hasn't seemed very active. Can you... I'd like to keep a dustbird as a pet. What are some key points I should consider? Is it possible to keep a All right, They will it seems like you all competition have जाए a बाहर great deal में, of questions. पहले lecture देना है। But I am in the middle of the Inter-Darshan Championship at the moment, so I'm afraid I can't answer them all now. Let me propose an alternative. Next month, there will be a biology lecture at Gandharvaville, and I will be sharing some interesting insights on living organisms. If you're interested, you can attend that lecture, and if you should have any questions, just prepare them ahead of time. I'll answer questions after I finish speaking. All right. Of course, please try to What ask is fun? more rational questions. Fun is equals to new For content. example, Ilahi. whether you can raise a Sorry, Rishtoran tiger as a pet or not new content is is mainly equals to dependent on whether you can fun, overcome you know? one in a fight. There is a new story, new lore to discover. Looks like Tainari's science lecture will draw quite a Oh, seems Kale's master does live up to his title as a teacher. Madam Faruzan, I've had a look around. Nearly all the butterflies in this area have been attracted by the incense. However, we can cast our bait further away to avoid this area. All right, then let's get moving. Seems like the competition's really heating up. Let's go see how the other contestants are doing. टिकनारी कंपटीशन जीतने आया भी नहीं है, हाँ उसको फर्क ही नहीं पड़ता कंपटीशन चल भी रहा है एक्चुअली में। Seems the wind is... Seems like फारूजान की टीम मूव कर चुकी है कैफे के पास। वॉन्डरर कहीं तो कैफे के आसपास घूम रहा है। लाइला पे बात करने का ऑप्शन आ रहा है मुझे। आई थिंक आई हैव टू गो टू लाइला नाउ, क्योंकि लाइला परेशान दिख रही है हमें। 20 लाइक्स हो गए? कब हुए इलाही? चलो नाइस। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है हम इसको लाइला को। कहाँ पे है बे? कहाँ बैठी हो? अच्छा यहाँ बैठी हो, दिखती नहीं है भाई। Layla, how are things going on your end? I've been searching for quite a while now. Instead, I ended up catching a few mechanical devices that looked very... Looks like Barrow's on it. I'll keep up the search. That said, I've noticed that a number of butterflies in the city has already decreased a lot compared to when the event started. Probably because the other contestants are coming up with their own ways to catch butterflies. What's this? A swift fly? Oh, what a coincidence. I guess I just need to catch it now. Oh, please wait. It's so fast! Paimon thought all Hatham said they were only a little faster. No, come back. भाई तो क्रिस्टल फ्लाइज जैसी लग रही हैं स्विफ्ट फ्लाइज, जितनी तेजी से उड़ रही हैं। क्रिस्टल फ्लाइज भी इतनी तेजी से उड़ती हैं, मतलब पकड़ में नहीं आती क्रिस्टल फ्लाइज, कितना भी लंबा इंसान हो उससे। Locator's going off. Looks like someone's already cut themselves a swift fly. अरे पकड़ ले लाइला, ले तेरे लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, ले बॉडी ब्लॉक कर रहा मैं। पकड़ इसको लाइला, बॉडी ब्लॉक में डालता, पकड़ इसको।
लैला पकड़. The locator's going off again. So, someone else finished too? That would mean that the one Layla's chasing is the last Swiftfly. ये वॉन्डर की तरफ जा रही है. अबे वो वॉन्डर पकड़ लेगा लैला, जल्दी पकड़ ले. वॉन्डर पकड़ के ले जाएगा इसको. जल्दी पकड़ ले. एक सेकंड. इट सीम्स फारूजान की टीम ने ऑलरेडी स्विफ्ट फ्लाइज को पकड़ लिया है, बिकॉज वो लोग के मार्कर मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, विच मीन्स फारूजान और क्या कहते हैं अलहाइद कावे ने दोनों ने पकड़ लिया है. Oh, it just occurred to me that we should also get you a... No, it's fine. Maybe you won't, but come on, just trust me on this one. Huh? Who are you, and what do you want? Please, don't move. Don't move? Who sent you? Dear. Don't worry, I can handle this. Now, tell me, what do you want? अरे उसको दिया के ऊपर जो फ्लावर है वो पसंद आ रहा है. भाई ये पिक्चर बहुत सही दिख रही है. सच बता रहा हूँ, ये पिक्चर बहुत सही दिख रही है. हम लाइक डेस्कटॉप वॉलपेपर बन सकता है, इतनी सही पिक्चर रही है. A butterfly? Was it on my head? Oh, you're... It's been a while, Layla. A friend of yours? Oh, so she must be the one you were telling me about. Huh? You two know each other? Oh yeah, it has been some time. The first time I ever woke up after sleepwalking, I somehow found myself in our village. Candace was the one who took care of me then. That's right. She didn't look well, so I gave her something to eat. She said a lot of complicated things about astrology, the night sky, the stars. Not sure. Right. Do you still want this butterfly? It seems like you were chasing it all. It's of little use to me, but... Just let her have it. It's no... The Swiftfly was flying so fast, but you were able to catch it like it was nothing. Oh, it didn't seem that quick, really. I was actually worried that I would injure it. But I'm glad that didn't happen. Layla, anyway, third place पे sorry बताओ. about the butterfly thing. With the way you suddenly came running over like that, I thought you were hired to take us out or something. Huh. On second thought, I guess I've never seen an assassin that looks tired with dark bags around their eyes. Oh, you must be taking part in the championship. Take it from me. Don't let it stop you from getting some rest. I'll do what I can. Thank you. We'll be on our way then. Alrighty, let's bring the Swiftfly. ये सही है बे, इन्होंने मतलब लाइक बाकी कैरेक्टर्स को भी बुलाया है सुमेरु सिटी में, बट इट्स लाइक उनको इवन दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपटीशन, बट उनको स्टोरी में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वोवन किया है. लाइक बहुत अच्छे से उनके साथ कोलैबोरेट किया है स्टोरी में. लाइक जिसने भी स्टोरी लिखी होगी अच्छी लिखी है एक्चुअली. It seems we have a third contestant who has returned with a swift fly. भाई कैंडिस दिया तो छोड़, कैंडिस ज्यादा बैडएस है. लोग भाग रहे हैं स्विफ्ट फ्लाइज पकड़ने के लिए. लैला कैंडिस ने ऐसे ही पकड़ के उठा लिया उसको एकदम से. बोली वो बहुत स्लो थी, वो तो स्विफ्ट फ्लाइज तेज थी नहीं उड़ने के मामले में. With that, the first round has come to an end. I anticipate that all of you... Your closing statement sounded so... How do I put it? Decisive? Well, you could certainly stand to try being more decisive, Nilu. It would help you live more freely. Hang on a second. Who were the first two contestants with Swiftfly? Tighnari was first, and as for the second, it's being discussed right now. It's being discussed? Hey, Al-Haytham, I think I've come up with a good idea. Second place gets 2 points, right? Can't Madame Faruzan and I split the points between us? Quite the imagination you have there. I've read the championship handbook from cover to cover, and I never saw any rule which permits that. Then we can just add a rule. Do you really think I'd do that? Come on, you're not going to stand in the way of my victory, are you? Well,
You're free to send the organizing committee an application outlining your naive proposal. They'll get back to you within 3 working days. 3 working days? It'll be too late by then. Unfortunately for you, even dreaming is gonna cost you. Paimon gets it now. Kaveh and Faruzan found the second Swiftfly together, but the rules say that only one person can get the point. Oh well, the rules are the rules. Since you call me madam and politely ask for my help. देख रहे हो सीनियरिटी की सीनियर होने का फायदा उठा रही है फारूजान कावे का लाइक सीनियर है ना थोड़ी फारूजान एज में तो फायदा उठा रही है कावे का एक्सप्लॉइट कर रही है उसको. So I'll put the points under Kave's name then? No. If I take these points, won't that only detract from your contributions, Madam Far? You might be all right with that, but I cannot do it. Not in good conscience. I don't have any problem with it. There are 2 more rounds after all. Losing one isn't a major setback. But if you insist, I have another method. We can draw lots to see who will receive the point. Lots. What? Is there something wrong with that idea? No. All right. I'll get the paper needed for the lots. Give me a moment. Caesar Lord Hang 100+ years old. उल्टा ही वो बोल रही है तुम ले लो. अच्छा हाँ सॉरी मेरे को लगा वो फारूजान बोल रही है मैं ले लेती हूँ. मेरे को मैडम बुलाया तो मैं पूरा पढ़ा नहीं है एक्चुअली. बाद में मेरे को यार रियलाइज हुआ कि मैंने गलत बोल दिया है. ससी मंजू अग्रवाल भाई मैंने 20 लाइक्स करवा दिए. अकाउंट रिव्यू कर दो. तुमने करवाए या लोगों ने किए हैं? किसकी आइडिया है ये मंजू अग्रवाल वाली? Oh, seriously? I'm sorry, but it appears that luck was on my side this time. No, you do deserve it. I'm just lamenting my bad luck. Perhaps that... Indeed. It's rare to see anyone with such terrible luck be so willing to decide victory via lots. And what would you know about that? I just... We can save bickering for later. Record the points under Farazan, and that'll finally bring the first round to a close. The second round will be held in the desert. We'll be moving our commentator stand over to Aru village. अरे मेरा 20th लाइक था यार. थोड़ा तो क्रेडिट दो. तुम्हारा 20th लाइक कैसे हो सकता है मंजरू ये बताओ पहले. अकेले तुमने 20 लाइक थोड़ी मारे होंगे. इतने सारे लोग यहाँ पे ड्रैको बैठा है, ससी बैठा है, ये लोग ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं बिना लाइक करे हुए. Let's meet up in Aru village once everything is ready. तुम बाकियों I'll का announce the क्रेडिट खा रहे details हो of यार. the second round then. गलत बात Till है ये. then, you have some free time. I'm off the clock at this point, so Wait, I'll hate them! Don't be upset, Kaveh. Sighing can carry away your good luck. Yo Astrox, welcome to the stream. कैसे हो Astrox? Oh, so that's how it works. In that case, I'll take in some deep breaths. Maybe that'll help me make up... I'll win the next round. Looks like you've managed to pick yourself back up, young man. Good. I must warn you, though, that I'm quite familiar with the desert. You'll have to try your best if you don't want to lose. I finally got Sealy dude. Congrats Astrox. I'm no stranger to the मैं तो desert खेला ही either. नहीं है I'll be गेम fine. काफी दिनों से Alright मैं then, छोड़ दिया that's enough खेलना chit-chat एक्चुअली for now. I'm going to check the area मैंने out. पुल ही नहीं किया सिली पे. But congrats to you Astrox. नंबर में लिखो मंजनू. मैं ऐसे टाइप नहीं करेगा. नंबर में लिखो. मैं कर लेता फिर उसके बाद. कट सीन के बाद. Guess we should also... Why, you two look a little lost. If you're not sure where to start enjoying the Academia extravaganza, then may I suggest... Your boss? Who's that? Well, only the most famous merchant in all of Sumeru, Lord Sangamo Bay. Oh, you mean Dory! Precisely. Our boss sent me to inform you two that she'll be waiting for you I at enjoyed the Sumeru story and City's gameplay, North not gonna lie. Gate. हाँ स्टोरी एक्चुअली में फन है. लाइक ये अच्छा तो उसकी बात कर रहा है क्या होंका स्टार रेल की? हाँ होंका स्टार रेल में भी स्टोरी अच्छी है. इस गेम में भी ये इवेंट में स्टोरी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है इस बार की. आई नो इसमें लाइक क्या कहते हैं ल्यूए जैसा वो जो नहीं होता लैंटर्न राइड होता है उसके जैसा एक्शन नहीं है. लेकिन स्टोरी फन है इसकी. इस इवेंट की भी काफ़ी ज़्यादा फन है. ट्रैको क्या रिव्यू करना है तुम्हारा?
साइनो आया का नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना। ये किसकी आईडी दिया है तूने ड्रैको? ये किसकी आईडी दिया है? ये किसकी आईडी दिया है? रिगार्डलेस मैं नहीं करेगा क्या कहते हैं। ये किसकी आईडी दे दिया तूने मेरे को? राहुल की आईडी क्यों दिया तूने ड्रैको? अच्छा रूममेट की आईडी है। Okay. I'll do the Yaimiko and D-Look review in your account. Manju. Okay. EM मुझे दिख रहा 142 1800 अटैक के साथ 63 129 ओके। प्रोडाइव आर्काइक इस्तेमाल कर रहे हो तुमने 90 नहीं किया है वेपन और ठीक है अभी के हिसाब से ठीक है यार 52 के हिसाब से ठीक है बट D-Look में अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे को ऐसा लगता है। एज फॉर यामी को 70 लेवल की बिल्ड की है तुमने एंड 76 to 1110 रखा है 261 एलिमेंटल मास्टरी भी रखी है तुमने यामी को पे एग्रावेट वाली यामी को बिल्ड की है क्या? तुमने 2 पीस वॉन्डरस ट्रूप लगाया है तुमने आर्टिफैक्ट ही नहीं लगाए हैं। देख लेता हूँ मैं ट्रैक को 1 सेकंड रुको। नीलू देखूंगा मैं कुछ और कुछ भी नहीं देखूंगा नीलू देखते हैं अपन ठीक है कुछ भी नहीं देखेंगे ट्रैक को ठीक है मेरे हिसाब से अभी लेकिन इसका बिल्ड सही करना पड़ेगा तुमको। मैं सजेस्ट करूंगा कि पैराडाइज ऑफ लॉस्ट पे या तो क्या कहते हैं 4 पीस थंडरिंग फ्यूरी पे बिल्ड करो याइमिको को अगर तुम एग्रावेट याइमिको बना रहे हो। अगर फुल इलेक्ट्रो वाली याइमिको बना रहे हो देन 2 पीस थंडरिंग 2 पीस अटैक बोनस वाला सेट दो एंड उस पर बिल्ड करो अपनी याइमिको को तो डैमेज अच्छा आएगा तुम्हारा। बट मैं एग्रावेट याइमिको को प्रेफर करूँगा मैं बोलूँगा तुम्हारे लिए बट स्टिल काफ़ी रूम है इम्प्रूवमेंट की तुम्हारे लेवल अभी कैरेक्टर लेवल अंडर लेवल हैं। रुको देखते हैं ट्रैक को तुम्हारे रूममेट की देखते हैं कुछ भी नहीं रखेंगे नीलू देखेंगे अपन नीलू अच्छी होनी चाहिए बस ठीक है हमको फ़र्क नहीं पड़ता नीलू और राइडन अच्छी होनी चाहिए सिर्फ What? DPS नीलू? What? ये क्या है? ये कैसी DPS नीलू है? ये मेरे को ना इधर की लग रही है ना उधर की लग रही है तो बीच की लग रही है नीलू। ये कैसी नीलू है? ये इधर की भी नहीं है उधर की भी नहीं है ऐसा लग रहा है बंदे को नीलू बिल्ड ही नहीं करनी थी जेड कटर पहना दिया इसलिए उसने और लाइक फ्लैक्स करना था लोगों के ऊपर तो उसने लाइक कुछ भी आर्टिफैक्ट पीसेस दे दिया जो अच्छे वाले आर्टिफैक्ट पीसेस है सारे उठा के डाल दिए कैरेक्टर पे ऐसा लग रहा है। ये कैसी नीलू है? छी भाई छी छी नहीं देखेगा मैं ऐसे अकाउंट को नीलू खराब कर दी इसने नहीं देखेगा मैं इस अकाउंट को ना ना भाई नीलू की बेइज्जती नहीं देखी जाएगी हमसे नीलू की जो बेइज्जती करते हैं हम नहीं देखते उसके अकाउंट को बिल्कुल नहीं के देखते हम। Dory. Well, if it isn't the traveler in Paimon. Hey, Dory, are you here to attend the academia? Of course. People are practically flocking to Sumeru City. You couldn't ask for a better opportunity to do business. This is one of the entrances into the city. ड्रैगो तुम फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं हो मैं कैसे देख लूं तुमको तुम फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं हो तुम अभी भी बैन लिस्ट में हो। मैं ये मेरे को अभी याद आया फ्रैगर ने तुमको अनबैन ही नहीं कराया फ्रैगर ने उल्टा मेरे को बोला कि तेरे को मैं क्या कहते हैं फ्रैगर के साथ ही अनबैन करूं तो तू अभी भी बैंड ही है ड्रैको सैडली। Well, is
Is there anything you'd like to purchase? फ्रैगर की फेवरेट गर्ल आ गई है डोरी यहाँ पे कट सीन में. Well, wait, we're celebrating the extravaganza and you're only thinking of eating... I mean, of course, we've got lots of things to eat. The Wisdom Gala is about to begin, and once it starts, each of the Darshans will prepare a small challenge for everyone. And just between us, I have some super booster supplements for sale. Eat just one to boost both your... No thanks, we'll pass. These little challenges are gonna be a cinch for the two of us. Anyway, Paimon just wants something to eat, please. Oh हाँ, जिसने डीलुक बिल्ड किया था ना, मैं सजेस्ट करूँगा अगर कोई बेटर क्लेमोर अगर आ रहा है किसी उसमें बैनर पे, एक्सेप्ट यूला बैनर छोड़ के, कोई अगर बेटर क्लेमोर आ रहा है तो वो पुल कर लेना. ये मत इस्तेमाल करो प्रोटोटाइप वाला क्लेमोर, क्योंकि यू नो डीलुक के साथ डैमेज नहीं आएगा फ्री टू प्ले वाले वेपन पे. अच्छा डैमेज चाहिए डीलुक पे तो तुमको क्रिट रेट के डैमेज हाई रखना पड़ेगा फ्री टू प्ले वाले वेपन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो रैदर बुलग्रेव स्टोन या तो कोई 5 स्टार क्लेमोर पुल कर लो डीलुक के लिए स्पेसिफिकली, अगर डीलुक पसंद है ज़्यादा अच्छा तो, क्योंकि डिफरेंस डे एंड नाइट का पड़ता है. देख ले ड्रैको, सुन लिया फ्रैगर के मुंह से. All right. Mora is Mora. Well, Paimon's Let me see. This is a huge job, isn't it? If this works out, we'll be set. Here you go. 2 servings of touching. See? I told you there's nothing Lord Sangamabe can't procure. Yay! Huh? What are you looking at? I thought I just saw someone just now. Who? Someone we know? Never mind. Was it someone suspicious? Have we attracted some unwanted attention? कुछ भी कोई ना एक साथ मिलके ज्वाइन करेंगे हम. Huh? What's happening, Dory? I don't know who you saw just now, but उसके बाद साइनो आया का करेंगे. हाँ फिर देख लेंगे. सुजा ब्रो होंका लाइव स्ट्रीम वैन मे बी संडे वगैरह को फ्रैगर कंटिन्यू करेंगे. तब तक मैं थोड़ा फार्मिंग वगैरह कर लूँगा रिसोर्सेस से, यू नो, क्योंकि स्पीड रन करने में फ़ायदा नहीं है. 2 दिन स्पीड रन करके मैं थक गया हूँ, सिर दर्द हो रहा है मेरा होंकाई स्पीड रन करके. वैसे मैं मोस्ट लाइकली नहीं खेलूँगा ट्रैकर, बोर हो गया हूँ होंकाई स्टार रेल से. प्लस आई एम सो पिस्ड विथ माई लक राइट नाउ, सो शायद से ना खेलूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है. खेलना होगा तो रीडाउनलोड करना पड़ेगा होंकाई स्टार रेल मुझे. Diluc can do damage as Serpent Spine with prototype. मैंने कब बोला कुलदीप? मैंने 5 स्टार वेपन बोला है. बैटल पास वाला सरपेंट स्पाइन तुम्हारा 5 स्टार वेपन नहीं होता है कुलदीप, वो 4 स्टार ही होता है. मैंने 5 स्टार और 4 स्टार के बीच में डिफरेंस बोला है. अब ये क्या खुल गया है यहाँ पे? 6 डार्सान कुछ खुले हैं. ये क्या खुला है? नहीं आएगा ना फ्रैगर? मजा तुमको आ रहा है फ्रैगर, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है इसलिए मजा आ रहा है. हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है. You're in for a little shock. Hear my prayer. Frostbite.
Did I just saw catch on Candice? भाई कैच इस्तेमाल, भाई ये पहली बार फ्री टू प्ले वेपन दे रखे हैं किसी कैरेक्टर को, पता है ट्रायल में, और कैंडिस कैच पे है इनकी। 2 पीस टेनासिटी, 2 पीस एम्बलम से आउटफिट। एचपी के बेसिस पे डैमेज होता है इसका। 34 के एचपी दी है विद 26 to 91। ये क्या कैंडिस है? मैंने सिली निकाल के वेपन निकाला 78 पीडी पे। सिली बैनर पे 35 की पीडी भी बिल्ड हो गई है, आराम से पुल मिलेंगे आपको। वही तो बात है फ्रैगर, तुमको मजा आ रहा है क्योंकि सब कुछ मिल चुका है, हमको मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं मिला है तो। करना क्या चाह रहे हैं इसके साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रिंगलेस है, विटसेथ है, डेवोनिया स्वॉर्ड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लीजा का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है लीजा का ट्रायल है। कैंडिस का ट्रायल है ही नहीं, इन्होंने क्या दे रखा है। They are saying Candice is not damaged. I don't know what they want here right now. सच बताओ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया है इन्होंने इनके साथ। I think this is supposed to be लीजा का क्या कहते हैं ट्रायल। न्यू प्लेनेट पे क्वेस्ट मस्त है, पजल वगैरह भी बहुत सारे हैं सच्ची। तो तुम खेलो ना फ्रैगर, हमको क्यों कन्विंस कर रहे हो। फिशल पे स्ट्रिंगलेस ही होगी ऑब्वियसली। 256 के साथ 57 to 191 दे रखा है। फिशल का बिल्ड सही किया है इन्होंने। कैंडिस का पता नहीं क्या बिल्ड किया है इन्होंने, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैंडिस के साथ करना क्या चाहते हैं ये लोग। एम्बर को प्रोटोटाइप वेपन दिया, प्रोटोटाइप क्रेसेंट दिया है। वेट, एम्बर को प्रोटोटाइप क्रेसेंट क्यों दिया है इन्होंने? इनको ऐसा क्यों लगता है कि हम लाइक क्या कहते हैं, एम्बर से चार्ज करके शॉट मारेंगे एनिमीज पे। (26 to 154 दे रखा है। क्रिट फिशिंग करवा रहा है एम्बर से। ये पता है, ये लिटरली पता है, ये एम्बर का ट्रायल लग रहा है फिशल से ज्यादा। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये एम्बर का ट्रायल लग रहा है फिशल से ज्यादा मुझे देख के, क्योंकि क्रिट रेशियो ऐसा दे रखा है इन्होंने। Freeze! This world will be frozen in time. Midnight Phantasmagoria. Let it rain. Bet you can't keep up with me. I'll race you there. Dodge this. Don't get frostbite. By royal decree, Shadow Ray. Okay. सिली Z0 प्रेडिक्टेबल वेपन के साथ भी बफ 100 के मार सकती है। खेलो। नहीं खेलेंगे हम फ्रैगर। क्या कर लोगे फ्रैगर? नहीं खेलेंगे हम।
अरे वो एम्बर है, कान्यू नहीं। फ्लोर पे क्यों मार रहे हो? अरे दो ही ये कान्यू खेल खेल के, और मैं उसको फ्लोर को नहीं मार रहा था, वहाँ पे वो क्रायो स्लाइम को मार रहा था मैं, छोटे वाले को। वो बंदा कूद गया था बीच में, तो मेरा शॉट मिस हो गया क्रायो स्लाइम के ऊपर। वो अलग बात है। मैं क्रायो स्लाइम, वो हाइड्रो स्लाइम को मारने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। I didn't mean to miss there, you know. All characters are made with some role tied circuit. Facial is off-field support, Candace burst support, and Ember is on-field DPS. हमें रोल्स चेंज किए हैं फॉर आवर कंफर्ट। भाई क्वेस्ट बहुत लंबे हैं, इसमें भी टाइम लगेगा। देखते हैं फ्रैगर कितना टाइम लगता है। मज़ा आना चाहिए सिर्फ क्वेस्ट करने में फ्रैगर। फर्क नहीं पड़ता कि क्वेस्ट लंबा है कि कैसा है, क्वेस्ट में मज़ा आना चाहिए सिर्फ। ठीक है। I only have Clara in HSR. Clara is way too OP, dude. Draco बहुत OP है क्लारा HSR में, सच बता रहा हूँ। उसका काउंटर ना अगर ढंग से बिल्ड कर लिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्लारा का। वेट, वेन्यू मूव कर गया है ये? आरू विलेज चला गया है वेन्यू, इट सेज। और तूने खेला भी नहीं है ड्रैको HSR, थोड़ा सा खेल के छोड़ दिया है, तो तू तो बोल ही मत, ठीक है ड्रैको। क्वेस्ट में मजा एक्सपेक्टेड करना बंद कर दो अब नहीं आता इंटरेस्टिंग क्वेस्ट। है तो ये वाला, है तो इवेंट इंटरेस्टिंग है ये वाला। तुमको कहाँ से इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कुलदीप ये क्वेस्ट इवेंट का? मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। Is it me, or are the bags under your eyes even darker than during the last round? ठीक है, मत बोल। Are you all right? Thanks for the concern, Kaveh. I just haven't been sleeping well. Even though I try to fall asleep, I can't get the championship out of my head. And before I know it, it's morning again. I know the feeling. That happens to me too when I'm agonizing over my blueprints. Do you have any tips for dealing with that? To be honest with you, no. You could say there are many things that don't have a quick fix and can only be endured. I suppose you can think of it as something akin to an illness. Sometimes there's no effective cure, so you just have to let things run their course. I don't know what's stressing you out, but I can feel all the anxiety New and planet pressure track coming try from करो you. तो सुझा The भाई, next अगर round's about to ना मजा आए start, तब so लीव chin कर up देना। and do your best. फ्रैगर रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, गेम देखेंगे। Oh, okay. Looks like everyone's here. I will now explain the second round to you all. मेरे को तो तीन ही लोग दिख रहे हैं। सब लोग कहाँ दिख रहे हैं तेरे को यहाँ पे अलायतम? There are 3 ley line disruptors buried in the area around Aru village. These devices can imitate the effects of ley line disruption and will constantly interfere with the environment. Your goal is to shut them. The first 3 who manage to finish this task will be awarded 4, 3, and 2 points accordingly. Note that each person may only bring a set amount of food and water with them, and that leaving the designated competition zone will result in disqualification. Well, what do you think? Want to team up again? I shall consider letting you have the points on account of what happened in the previous round. That's all right. I've been here many times, and in any case, machines are one of my specialties. I doubt this will be particularly difficult. It's good to see such confidence in a youngster like yourself. I also happen to be well acquainted with... But aside from us, you should remember that there's a favorite for champion. We must be... A favorite to win? Shh! Not so loud. I mean that boy, Tainari. He took first place in the previous round, and if he does so again this time, we may as well declare this comp... I heard that you solved the Vidya Forest's leyline effluence problem with him not long ago. Since this round involves resolving a machine-simulated leyline disruption, it should be a simple matter for him. That's
true. ये लोग स्टोरी क्वेस्ट की बात कर रहे हैं, पता है ये जो हम लोग ने ले लाइन पे वहाँ पे क्या कहते हैं अवेडिया फॉरेस्ट में नहीं, वो क्या कहते हैं एक साइंटिस्ट को बचाया था जो टिग्नारी का जूनियर था, वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे इस कट सीन में। He already has Kale, who is an excellent pupil. If you were to win this round as well, then wouldn't we just be हाँ, letting him इंस्टॉल have कर all the दिया fun? फ्रैगर गुस्से में आके। As his senior, it's my solemn duty to prevent such an inequitable arrangement from happening. I'll get going as well. See you later. How are you feeling? I think I'm okay, but I'll take things slowly for now. Is this all the water we're getting? Sorry. That's what the rules say. While this round seems to be about how quickly you can shut down the devices, it's also testing your ability to survive in tough conditions. I knew it'd be harder Endurance than I had test है ये वाला। expected. So we'll either need to Snowflake। find the devices as quickly as क्या है possible, स्नोफ्लेक? or we'll have to हरिता? save our energy and wait for an opportunity. Okay. You're welcome. Please take. Well, there goes everybody. गाइस एक बार चेक करना है ये वाटर कहीं नीलू ने तो नहीं दिया है। What? Oh, right! Didn't Farozan say that Tainari's the favorite to win? Beginnings and endings. Find Tignari. ओ भाई ये लोग कहाँ कहाँ जाके बैठे हैं? अब मैं क्या ही बोलूँ? मत बोलो कुछ फ्रैगर। नहीं पूछा तुमसे किसी ने, मत बोलो कुछ भी। कहाँ गए? टिग्नारी है कहाँ पे? दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा घर के पास होगा आई थिंक। Hey, Tainari? Tainari? Huh? Weird. The locator says that he should be around here somewhere. Tainari! Can you hear us? He's over there. He's You're sleeping? right. Wait, what? Huh? Oh no, it looks like he... Tainari, are you okay? It's so hot. Oh, so you passed out because of the heat. Are you not used to getting around in the desert? That's right. I usually bring lots of water when I go to the desert, precisely to avoid this situation. मैं बताता हूँ अभी स्टार्ट हुआ है गेम। आगे मस्त मस्त कंटेंट बाद में आपको रिग्रेट होगा कि मैंने नहीं खेला क्योंकि उसमें इवेंट भी आने वाले हैं। I went through all my water very quickly, इवेंट तो मेरे and वैसे भी खुल with जाएंगे the यार, effects हाई of है the ना उसमें। disturbed ley lines, I started feeling dizzy. My ancestors, the Valukashuna, were originally from the desert. But I guess this is what happens when a species migrates. They become intolerant of their original environment. This isn't the time for a history lesson. Humans. Such fragile beings. Your bodies can't even survive extreme changes in the environment. Here, take this. Are you serious? This had better be just normal water. Hey, you're leaving already? Paimon really doesn't get that guy. What's he... मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इस बार Thanks, you क्या two. कहते हैं साइनो करेगा, फर्स्ट प्लेस लेगा क्योंकि साइनो इज यूज्ड टू डेजर्ट है ना। साइनो फर्स्ट प्लेस आएगा, सेकंड तुम्हारा क्या कहते हैं कावे वगैरह आएंगे, थर्ड शायद ये आएगा तुम्हारा वॉन्डरर आएगा इस बार, क्योंकि लैला और टिग्नारी लग नहीं रहा है ये लोग कर पाएंगे इस राउंड में कंप्लीट। Found you at last. Sino, you're here too. I was concerned, so I came back to check on you. Will you be... The fur on my tail is so dry, it's practically been singed right off. I don't see any purpose in pushing myself beyond what is reasonable. It appears I'm not suited to this particular round. I should probably just return to... Really? So you're backing out? Yes. I do have my results in the first round to serve as a buffer, so
Even if I forfeit this round, I still have a chance to turn things around later. Withdrawing now will allow me to Leaks are conserve my coming already energy. that Kafka is Continuing to coming push on onward 1.2. would be Kafka का मस्त counterproductive. पार्ट है क्वेस्ट में सूझा भाई मजा आएगा लिटरली नहीं जानना ना हमको फ्रैगर मत दो लीक्स हमें नहीं पूछा हमने A wise decision. Let's. Oh, stop trying to be so polite. Bring Tignari back so he can rest. Wait, हमारी पॉकेट में है क्या टिग्नारी जो मतलब टिग्नारी को हम लेके जा रहे हैं ऐसे हमारे बाजू में चल ही नहीं रहा टिग्नारी ऐसा लग रहा है हम पॉकेट में रखे हैं टिग्नारी को अपने देख के ऐसे ही लग रहा है सच में मतलब हम अकेले घूम रहे हैं कट सीन में लैला के पास जाना है इट सीम्स लैला भी यहीं है लेकिन दिख नहीं रही है वेट इट सेज वेट अंडरग्राउंड बोल रहा है व्हाट डू यू मीन अंडरग्राउंड ये कैसे जाना है यहाँ पे क्यों नीचे जगह है क्या नहीं कुछ मारकर अंडरग्राउंड आ रहा है अच्छा यहाँ से जाना था ये ऊपर साइड से जाना था यहाँ पे वही मैं सोच रहा हूँ कि अंडरग्राउंड क्यों दिखा रहा है अरे ठीक है फ्रैगर मैं कब कुछ बोल रहा हूँ नहीं खेलना भाई मुझे मेरी मर्जी तुम क्यों इतना परेशान हो रहा हो How are you feeling now, Tainari? Do you want to rest some more? There's some shade here, so we can stop. All right. लैला भी यहीं पे है एक्चुअली में बोल रहा है Oh, Sino and Tainari. And you've got the Traveler and Paimon with you. Oh, hey, Layla! Yeah, the sun was too strong. What about you? Unfortunately not. I'm not quite as capable as I thought. I intend to withdraw from this round. Sino and the Traveler are... Withdraw? Can you even do that? I believe the rules do provide for such a situation. Alhaitham did say that the act of leaving the competition grounds would result in disqualification from the round. Didn't I ask you if you were all right before this? If you had just decided to withdraw then, you wouldn't have had to suffer. Well, I had to try, didn't I? So when I get back, I'm definitely going to make a batch of sun-resistant oil. Next time I venture into the desert, I'll be prepared. By the way, you're Layla, aren't you? You don't look very well yourself. Will you be all right? I did feel a little faint when I first entered the desert, but I feel a lot better after resting here for a while. Be careful not to push yourself too. Don't worry. I'm just... Feeling the pressure? You can tell? Your expression is similar to the ones I see on criminals' faces when I interrogate them. To tell you the truth, I'm still not sure whether I have what it takes to represent the Ratawa Histarshan in the championship. Most people voted for me because of all the rumors surrounding me. इसका voice suit नहीं कर रहा है एकदम टिग्नारी को. Rumors don't really mean anything. हाँ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है एक्चुअली में टिग्नारी का थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं थोड़ा स्टीप वॉइस है लाइक थोड़ा सा ऐसा चुभने वाला वॉइस है ना ऐसे मतलब बोलता है तो लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी अथॉरिटी है तुम्हारे ऊपर वो बोल रहा है
अभी वाले बंदे की ऐसे वॉइस लाइन लगती है कि भाई ऐसा करो कि बच्चा बोल रहा है. Even the people who usually criticize me voted for me this time. So I feel like I... So their expectations are putting pressure on you. Yes. But I think we used to हो जाएंगे जैसे हम लोग जैसे जैसे खेलेंगे गेम को उतने used to होते जाएंगे हम गेम के साथ. I think easily हमको फिर बाद में मालूम नहीं चलेगा कि टिग्नारी का वॉइस एक्चुअली चेंज हुआ भी था जैसे पाइमॉन के साथ हुआ है. To be completely honest, I बात don't सही है really तुम्हारी feel हरी any बट वही pressure. बोल रहा हूँ मैं. बट यूज्ड टू हो जाएंगे हम जैसे जैसे मतलब और टिग्नारी रिलेटेड लाइक क्वेस्ट वगैरह आएंगे या इवेंट्स वगैरह आते हैं तो. Firstly, those who expect things from you do not necessarily do so for benign reasons. On the other hand, those who do consider your feelings certainly wouldn't want you to push yourself. Next, we are researchers. Our primary duty is to interact with knowledge, not to meet others' expectations. As for me, I took part in this competition to advertise for an academic lecture at Gandharvaville next month. I'll obviously try my best during the competition, but I won't let any additional pressure get to me. Tough through time we will forget the old voice. Yeah, exactly. I think you can also try to find a clearly defined goal. That I understand. I'm absolutely parched after talking so. I've still got some water with me. No, I'll be all right. We aren't far from Aru village, so I can go the rest of the way myself. Yes. Hey, don't talk like that. I'm not dead, Sino. Everyone, I'll be heading back now. See you after the round ends. I'll continue searching for the ley line disruptors. Are you feeling better now, Layla? Yeah, I feel like some of the weight has been taken off my shoulders after chatting with Tainari. It's been a long time since I first left my hometown to come all sorts of complex मैंने पता है पहली बार नोटिस किया एक्चुअली जो लैला के बाल हैं उस पे भी स्टार्स बने हुए हैं. मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था, अभी नोटिस किया जस्ट कट सीन में कि लैला के बालों पे स्टार्स बने हुए हैं. Forcing me to continue running forward. When I was chosen as my Darshan's representative, बालों पे वो it बने हुए हैं, felt स्टार्स like बने हुए another हैं. boulder was added to the ones already rolling behind me. Every time I close my eyes, I think of all the people I We would disappointed prefer you by to be happy, myself. Laila. Yeah, I think that's what Tainari was trying to tell me. You're our good friends, which is why you didn't stop him from dropping out of this round. And That's right! No need to feel so... that said, he did also say that he hopes I could have more concrete goals for taking part in this competition. Anyway, I won't take up any more of your time. You still have to record the other contestants' progress. True. We should go look for the other. You could go see how Madame Farozan's doing. I've heard that she... Okay, let's go look for... Where is फारूजान? ओ भाई फारूजान तो काफी दूर निकल गई. ये पक्का डिस्क्वालीफाई होगी पता है फारूजान, क्योंकि आरू विलेज के घेरे से काफी बाहर आ गई है फारूजान और मेरे को वो भी दिख रहा है. आई थिंक पास में ही है. पक्का ये डिस्क्वालीफाई होने वाली है फारूजान. आई हैव अ फीलिंग. Let's see. क्या बोलते हैं? Hey there, Farozan. Have you made any progress? You're just in time. I'm about to start digging right here. Oh, you found the ley line Such a simple problem could never confound me. Not long after entering the desert, I discovered a primal construct that was acting abnormally. So I followed it. Once I got near here, it suddenly disappeared. Something in... You're a true expert, Madame Farozan. Well, I do have... Nope. Not... Well then, I suppose I'll be the first. What about that boy Taina... Oh? And why is... He's not used to being out and about in the desert. I didn't think he would have such a weakness. I suppose he could use a bit more training. What about the others?
Is that what Tawa has? Tainari gave Layla some advice, and she seems to be doing a lot better now. Sino just started his search for the disruptors, and as for Hat Guy, well... And what about Kaveh? Has he found a Paimon doesn't think so, or our locators would have already let us know. Strange. What's he lollygagging for? With his skills, you should have heard something from him by now. Well, I'm afraid the most thrilling moments are already done here. वेट, तो हमको देखने नहीं मिलेगा फारोजान का फाइट? ये तो गलत बात है यार। कट सीन या फिर हमको दिखना चाहिए था फारोजान की फाइट यहाँ पे। गलत बात है ये। अरे यार उड़ गए यार तेरे चक्कर में। तेरे को आना जरूरी था हैं? मेरे पीछे पीछे। Come on, stop following me! I already gave you all the food I had on me. You can cry all you want. I don't have any more food. All I have without water, traveling in the desert will be incredibly difficult. And I still need to find what I'm looking for. Marak, can you help me out here? Keep them away. Kaveh, there you are! और ये सूटकेस से बात कर सकता है। ये भी सही है। Faruzan told us to come see how you're doing. Just thinking about it makes me upset. Not long after I entered the desert, I was accosted by these fellows. I don't know why, but they didn't leave the competition grounds. And now the ley line disruptions have left them confused and circling around the area. The moment they saw me, they wouldn't leave me alone. They even cheated me out of my limited food supply. Hey, didn't I ask you to keep them away? Kaveh, is this flying metal... That's right. This is my toolbox, Marak. Your toolbox? Huh. It seems pretty fancy. Hey there! Can you understand us? पाइमन ऐसा लग रहा है एलियन से बातें कर रही है। Why is it here with you? Sometimes I need to carry things when I go out, so it's handy to have a portable toolbox. Well, this definitely doesn't look like an ordinary toolbox. It's a long story. When I was working in the desert, I ran into a merchant group who had a machine core they excavated from some tomb. It was clearly from King Deshret's civilization. His technology still isn't fully understood, and Kasharawar has many different opinions on this topic. Our current theories cannot explain such mysteries. Upon seeing such a rare, complete specimen before me, I forked over all the mora on my person to purchase. Some time back, I wanted to make an automated case that could store my offloaded items. With that core, I created Marak. It can't understand commands that are too complex, but it can serve as my assistant and help me with things like mapping and surveying. Most importantly, it can't talk, so it can't give me any attitude. Oh, yes. Thanks for helping hide the fact that I live at Leviathan's place earlier. Marak जो है. Well, Paimon was the one who gave it away in the first place. I hope this season of my life ends soon, so I can get things just started going downhill at some point. Maybe it all started when my mom remarried and left for Fontaine. Or maybe it all started when I spoke to Al-Haytham in the library. Wait. कावे की मॉम ने वापस से शादी की और कावे को छोड़ के चली गई। फॉन्टेन निकल ली वो। Which means Fontaine का कुछ लोर वगैरह आने वाला है क्या हमारे लिए कावे related? Or maybe it's because constructing the Palace of Alcazar's array burned through my funds. I'm still paying off the debt from that one. Oh, when's this going to end? Now that I think about it, I guess we're all unlucky here. It's not like any of you asked to be trapped in the ley line disruption. Okay, let me get you all out. Kaveh, aren't you going to look for the ley line? Yes, but I can't just leave them here, can I? Oh, forget it. The more I think about this, the more I feel a headache coming on.
I'll get back to searching once I get them out of here. Time's a wasting. I'm off. इसको पक्का कावे को वो करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज ये कावे ना ये लेलैंड डिसरप्टर एरिया से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है फॉक्सेस को, विच मीन्स ही इज गोइंग टू लाइक गो आउटसाइड द लेलैंड डिसरप्शन एरिया, और मे बी जो कंपटीशन एरिया है उसके बाहर जाएगा, तो कावे तो पक्का एलिमिनेट होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है. He really wants to win, but he can't ignore those he wants He to can help. only do one or the other. Paimon's always felt like he's the type who easily gets himself into tough. Paimon doesn't mean this in an insulting way, but he seems like the kind of guy who'd be really easy to take advantage of. You are certainly cruel with the truth. ये क्या बात थी? Someone's done already. That was quick. Right? Wonder who it... I think साइनो ने ख़त्म किया है, क्योंकि मुझे कावे यहाँ दिख रहा है, फारुजान यहाँ है, लैला अभी भी यहीं पे है, वॉन्डरर और क्या कहते हैं साइनो यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे. इट सीम्स इन्होंने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी. लेट्स सी पहले कावे का देख के आते, कावे का क्या चल रहा है. बंदा काफी तेज निकला बे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँच गए इतनी जल्दी. Shh, quiet. I'm currently trying. अरे इनका मीट ले लेता मैं, क्या बोलते हैं? Shh, quiet. इनको मार भी नहीं सकते, कावे फ्री हो जाता उससे, पता है मारने से. हर एक कैरेक्टर को पता है इन्होंने प्रॉपरली डिस्प्ले किया है, जो वीकनेस है या इनकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो सब प्रॉपरली इन्होंने डिस्प्ले किया है इस पे. Verification complete. Congratulations. मेरे को लग ही रहा था साइनो ने खत्म किया है. was the quickest. I am from Spontamod, after all. We know a lot about ley lines, so finding a disruptor was never going to be particular. Since the Traveler and Paimon also happen to be here, do you have anything you... Anything I want to say? My friend couldn't continue on, so failure was never an option. The bonds of yesterday will forge the road to tomorrow. भाई क्या है With ये the तो ties of स्पीच ही देने friendship लगा. that bind us, I won't lose to anyone. That's a line from King of Invocations, one of my favorite works, and it sums up my thoughts right now. It might be a good thing that Tainari isn't here, or else he'd give Sino a good smack right about... Oh, wow. It's already so late. Everyone's probably running low on food and want... Something similar happened in King of Invocations. Any thoughts on that, Alhaitham? I have no thoughts regarding King of Invocations. Milu obviously wasn't asking about that. Deserts are much more dangerous at night, so this competition should be nearing its end. At the moment, only Farazan, Layla, and Kaveh remain. I wonder who the next person to find a disruptor will be. Wait, only 3 people are left? Tainari forfeited, and Sino's already done. हाँ What वही about that guy? what about Wanderer? He also forfeited not long ago. हाँ? What? Paimon can't understand what he's thinking at all. उसने ही forfeit कर दिया. What? Like Alhaitham said, this round's almost over. Let's go see what the other contestants... Things are really heating up now. Compared to the abstraction of human emotions, the desert heat is... Not sweating too much, am I? Oh, it'd be so embarrassing if that was caught on camera. The weather today might affect this round. बोल रहा है weather today might affect this round. हाँ. Okay. मुझे लैला का मार्कर आ रहा है, लैला के पास चलते हैं. क्या हो गया फ्रैगर, बोलो. क्या लगता है तुम्हारी प्यारी लैला जीतने वाली है फ्रैगर?
guys have had to do a lot of running around this time. Well, in that case, the desert's getting colder now that night's falling, and the wind can really sting your face because of all the sand in it. नहीं मत बताओ फ्रैगर अब तो भूल ही गए थे तुमने पूरा खत्म कर लिया है this round yet? Sino's already shut one down. I circled the whole area, but I did have the chance to think some more about that thing that was weighing on my mind. And, well, my fellow Retawahist members must have all put my name forward for different reasons. And maybe a lot of them only picked me because they wanted to watch me make a fool of myself. But be that as it may, I believe that a lot of them genuinely do expect great things, and I want to live up to their expectations. Huh? But doesn't thinking like that put a lot... Of course, that comes with some amount of pressure for sure. But now I've thought that may not sound like a huge difference to you, but it's... Well, that's great! Also, now that I've relaxed, I think I'll मेरे को ऐसा लगने वाला अभी ट्रांसफॉर्म होने वाली लैला अपने दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाली है लैला अभी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस लैला का But the competition isn't over yet. Oh, Layla, she's really a bundle of nerves, isn't she? बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है गाइस अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है अब तो सारे लैला ले लाइंस ढूंढने वाली है लैला Wait, you're... स्लीप वॉकिंग लैला Good to see you too. Ooh, it's nice to be out. Feels like I've been cooped up inside for quite a while. Well, since I'm here, I guess I should help her finish this. What are we supposed to be doing here again? Let me see. Looks like she's basically gathered. Come with me, you two. लैला के घंटियां लगी हैं घंटियों की आवाज आ रही है लैला के पास से have a regular flow, similar to the way that celestial bodies follow fixed orbits. If we were looking down from on high, I wonder whether we'd find that the ley lines are just the reflections of the stars upon the Earth. Not all astrological phenomena can be directly observed. Some are deductions based on other details that we know. It's the same situation with the ley lines. The parts of them that are hidden underground can be identified via elemental energy, sound, and other phenomena. लैला की घंटियां कहाँ लगी हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा घंटियों की आवाज क्यों आ रही थी मुझे जब भागना चालू की थी इसने Plus, now that someone has shut one of the disruptors down, the contrast between before and after can provide me with further information still. Let me see. It should be here, I think. क्या तुम्हारे लिए ये क्लियर करना है क्या This should be it, right? I'll turn it off. That should restore the ley. Nice work! Again, I didn't do any of the real work. She'll probably wake up soon. No doubt. Will you be staying here for... Oh, time to check our locator. Perhaps they're about to... Huh? Why do you... Before the second round, he had a chat with the other me. He said that worries can be like illnesses. They don't always have a magic cure. Sometimes you just have to endure them as best you can until they run their course. But the way I see it, his situation is much worse than my other selves. She just hadn't found what she wanted to do at the moment, which is why Kaveh, meanwhile, knows what he wants to do. He's convinced that he has to win, and yet he doesn't have a second personality, but somehow he still seems that he's at odds with himself in some way. I don't know exactly how to describe it. It's like he's smiling on the outside, but there's no joy inside. Still, who knows? He must be more experienced than me. But back to the topic of wrapping up. ये लोग इतने गियर कैसे पहन लेते होंगे मैं तो ये सोचता हूँ गेम वाले कैरेक्टर को इतने गियर पहन रखे हैं बालों पे वो लगा हुआ है इनका क्लिप लगा हुआ है कानों पे भी पता नहीं क्या लगा रखी है लैला यहाँ पे We're super confident at this. वेट लैला का लोकेटर हट गया है लैला का लोकेटर कहाँ गया लैला का लोकेटर नहीं दिख रहा है मुझे तो But between the two of them,
Who's going to get there first? Let's head over quick. बहुत देर से परेशान कर रहा है साले हट के HP अभी ये कहाँ ऊपर है क्या ये अबे यार एक सेकेंड यहाँ पे अकेला खड़ा क्या कर रहा है तू Where do you think you're going? तू अकेला क्या कर रहा है बे यहाँ पे तेरे बाकी की पार्टी कहाँ है अबे यार ये लोग ऊपर हैं क्या एक्चुअली में ऊपर हैं It should be around. Finally found it. Kaveh? Oh, Madame Faruzan. And here I thought you would have finished this round. Faruzan, Kaveh! Oh, looks like Layla's. I didn't expect that you and I would find a disruptor at the same time. How are the other contestants doing? Kainari and Hat Guy forfeited, while Sino and Layla are already done. Huh? That's weird. Didn't you start digging really early on? Yes, I kept digging, but instead of finding a disruptor, I found a ruin. Faruzan ruin find कर I रही fell है down pretty deep, and it was completely dark in there. It took me quite some time to unlock the various mechanisms and return to the... That's actually really impressive. Finishing a week's worth of trials in such a short time. Huh. That's pretty amazing, What about you? Why are you so late? I encountered a lot of lost desert foxes along the way, and I brought them to the outskirts of the competition zone. When I came back, I was absolutely parched. And then I blacked out. Probably from the heat. When I woke up, it was already night. I used the last of my strength to... A most curious reason indeed. But are you sure you're all right? It sounds like you were in an incredibly dangerous situation. You said you were familiar with the desert. The way you handle problems... It does feel rather at odds with your title as a genius. It was problematic, but that had nothing to do with me being a genius. The way I did things wasn't optimal, but I wouldn't have been comfortable not doing it either. My conscience would have weighed on me. Youths these days, each stranger than the next. एक सेकंड ये फारूजन ब्लश कर रही है क्या But back to the main issue at hand. Since we are both very certain that this is where the final leyline disruptor is, let's dig it up then. Well, this is indeed it. Of that there is no doubt. But how shall we count the score this time? What is it, youngster? Oh, nothing. I was just thinking that this round's finally over. There shouldn't be any more innocent creatures getting wrapped up in danger. As for the points, I guess we can draw lots again later. I can't think of anything better. All right. In that case, let's all head back to our... Wait, there is more side quest here. अफान का एक साइड क्वेस्ट आ गया है मैं गलती से बात किया साइड क्वेस्ट निकला इसका अफान का इधर पे which means मैं इतना एक्सप्लोर करने के बाद भी अभी भी साइड क्वेस्ट बचा हुआ है मेरा यहाँ पे बोबा मिल्क तुम ही पी लो फ्रैगर
तुमको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि शकल से दिख रहा है तुमको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो मजे मजे में उससे बात किया था, साइड क्वेस्ट ही निकल आया। वाटर द 3 सीड्स फर्स्ट बोल रहा है, फिर टीम स्विच करनी पड़ेगी। अभी वाटर वाले कैरेक्टर डाल के आया मैं अंदर। मेरी शकल कैसी दिख रही है? कौन सी शकल? अच्छा तुम हो क्या आफान नाम से फ्रैगर इस गेम में? थर्टी 30 प्रीमोस 20,000 मोरा दिया इसने बंदे ने। अरे फिर तो आना पड़ेगा बाद में इसके पास या आफान के पास। मैं रैंडमली आया था लिटरली इसके पास। बंदे ने 30 प्रीमो और 20,000 मोरा दिया और प्लस कुछ खाने पीने का सामान भी दिया है, खर्चा पानी भी दिया है इस बंदे ने। ये अच्छा है रे भाई, आई लाइक दिस गाय। देखा है ऐसे हिडन क्वेस्ट ढूंढे जाते हैं फ्रैगर, सीखो हमसे। हम सूंघ के बता देते हैं हिडन क्वेस्ट कहाँ पे है। बात करनी पड़ेगी, बात करते टाइम डायलॉग सेलेक्ट करोगे तो तुमको ऑप्शन देगा। आई थिंक टाइम गेटेड है ये क्वेस्ट, तो डेली आना पड़ेगा। इसका पहले भी 2-3 क्वेस्ट करा था मैंने, आज फिर किया। मेरे को पता नहीं था खत्म हो गया, मेरे को लगा खत्म हो चुका होगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ था इसका, अभी भी बचा है क्वेस्ट। तो टाइम गेटेड है तो डेली आना पड़ेगा, एक बार बात करनी पड़ेगी। She went to get water. She'll be back shortly. I think until the flowers will bloom, you have to talk to that guy. Again. You get caught up in something so easily. I'm not caught up in anything. Don't make it sound like I take pleasure in having... Really? Then should I say that you have a curious affinity for drawing lots? I'll go get the box and slips of paper for the lots. Please wait a moment. Oh, here we go again. Let's see how I fare. I got it! Did you see that? I won! Congratulations. Looks like Kave's luck's taken a turn for the better. Finally! After all this time! It looks like you've been rewarded for your tribulations in the desert. This round's points are yours. उसको फारूजान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके पास 1 पॉइंट ज्यादा है कावे से, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा फारूजान को। And with that, our second round is done. Sino, Layla, and Kave are our victorious As for the current standings, Sino and Layla both have 4 points, putting them both in first place. The rest in descending order are Tainari, Faruzan, Kave, and Hakai. The next round will be the final one. Please rest up before I heard बच्ची लग रही है नीलू अलहायतम के बाजू में। new games. So feel free to भाई अलहायतम interested. पूरा पिलर है भाई, Otherwise, जोंगली का पिलर के बराबर है अलहायतम का साइज, तो लगेगी ऑब्वियसली नीलू उसके सामने बच्ची। गो प्ले एट एन एकेडमिया बूथ। कहाँ पे जाना है? कभी कभी तो लगता है मुझे अलहायतम पता है जोंगली से लंबा होगा हाइट में, इतना बड़ा है हाइट में।
on your mind this entire time? That white-haired man I saw before competition started. Traveler, Paimon. I finally found you. Finally? Don't you feel like there's something off about this year's Academia Extravaganza? When Candace and I were at the cafe earlier, we might have caught sight of some mercs on business. Thing is, they were disguised as tourists here to shop, but no disguise can mask the stench of blood. Just from their suspicious looks, I bet they do dirty work like kidnapping or... We eavesdropped on them for a while. Their target seems to be someone called Sachin. Sachin? Isn't that the person who Karina mentioned during the opening ceremony? Wait, इन्होंने सचिन का नाम बिगाड़ के सचिन कर दिया है. Can you believe that? इनसे भाई सचिन बोला नहीं जा रहा नॉर्मल नेम, सचिन बोल रहे हैं ये लोग. नाम बिगाड़ दिया अच्छा खासा नाम इन्होंने गेम वालों ने. यो एक वेब सीरीज लगा रखी है डाउनलोड पे, 144 पे चल रहा है. तो 144p वाली डाउनलोड कर रहे हो वेब सीरीज? वाह भाई धीरज. बताओ, एक छोटा सा नाम था सचिन, उसको ही बिगाड़ के इन्होंने सचिन कर दिया है. अब अगली बार से किसी का फ्रेंड मिले ना गाइस सचिन नाम से, तो उसको बोला हे सचिन इधर आ. Sachin. He's apparently the sponsor behind the competition prizes and the diadem of now. Sounds like a rich person, all right. It makes sense now. अच्छा 144 पे स्ट्रीम है. ओके ओके, तो कुछ तो दिख ही नहीं रहा होगा तुमको धीरज, आवाज भी नहीं आ रही होगी. The Eremites have been struggling to make ends meet recently. So a lot of groups have been doing private work that involve, in their words, one gig sets you up for half a year. Just one job like this nets them enough mora to take it easy for a while. The extravaganza has brought many tourists to Sumeru City all at once, so it's likely that they took advantage of the bustle to sneak in. Dia and I wanted to directly capture them, but they were on guard and made some excuse to slip away. I would have tied him up if it wouldn't have caused a scene. Who's legally supposed to take care of this kind of thing? The Matra? If Sino were here, he'd definitely get involved. Why don't we head over? Thanks a million, you... Not at all. It was... Yeah, don't sweat it. The Eremites' reputation is gonna get even worse if these scumbags succeed. Sachin, we like Ayvedya बात का grip. क्या? Ayvedya बात का grip. मुझे समझ में नहीं आया तेरा जोक. बैट का ग्रिप बोल रहे हो क्या? आज एक बंदे की स्ट्रीम देख रहा था, उसका स्टैंडर्ड पेटी बिल्ड थी, तो उसमें 4-5 प्रीमो पुल करे, उसको डीएम मिल गई. लोल मेरे को भी चाहिए. अरे मिलेगी फ्रैगर, चिंता मत करो, जितने भी 50 आ रहोगे डीआई मिलेगी तुमको. टीजी और डीआ तुमको देगी प्यार. Should you require our aid, come find... मैं मारू क्या जोक्स? नहीं ड्रैको, कोई भाव नहीं दे रहा तुमको, रहने दो. Paimon's starting to think that there's more than meets the eye here too. वो बोल रहा था डिया के बैनर पे 50-50 आ रहा था. साला लकी था वे, मतलब स्टैंडर्ड से डिया निकाल लिया उस बंदे ने, और डिया के बैनर पे जब पुल किया तो डिया के बैनर पे डिया नहीं मिली उस बंदे को. भाई सही था, बंदा लकी है कि इवेंचुअली उसको डिया मिल तो गई, लेकिन उसको 50-50 भी लॉस नहीं करनी पड़ी. आए वाद्य बैट का ग्रिप वाला मीम है, यूट्यूब पे सर्च करो, 10 सेकंड वाला क्लिप होगा. रुको सर्च करता मैं. क्या तुम बोल रहे हो? आई होप कॉपीराइट ना आए मुझे. रुको. स्पेलिंग सही लिखी ना तूने? ये वैद्या सचिन सर ने रिटायरमेंट ले ली है, तो आज के बाद मैं भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा. अरे बेड़िया, जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल.
शुद्धा उठला सचिन सर ने रिटायरमेंट ले ली है तो आज के बाद मैं भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये क्या था? जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गांड में डाल। शुद्धा उठला भाई ये क्या था? लोल। Like, thinking like this isn't doing anything. ये लेकिन एक्चुअली सचिन की वॉइस नहीं है ना, आई थिंक ये तो किसी ने बोला है, इनेक्ट किया है, आई थिंक दिस इज नॉट सचिन्स वॉइस, राइट? सचिन का जवाब टू हिज नेम चेंज। ये क्या था भाई? कैमरा एंगल ही पूरा मोड़ दिया, एकदम से ऐसे फुल मोड़ा है कैमरा एंगल, टान दिया है उसको कैमरा एंगल को, और हमको वहां तक खिसका के भी ले गया है। Hello, both. It's been a while. Someone's planning to kidnap Sachin. Goodness. The growing popularity of the extravaganza has given him quite the reputation boost as its sponsor. He's seen as... Well, since he's got a target on his back now, To tell you the truth, we've thought about doing just that. However, Sachin apparently prefers to spend most of his time out doing field work, and hardly ever comes back to Sumeru City. No one has been able to contact him. Our only lead is something he once said. Each time the Inter-Darshan Championship is held, I will be watching from close by to choose a suitable person to inherit my estate. Assuming he remains committed to that promise, then he must be right here in the city somewhere. I suspect that the Eremites in question must have heard about that as well, and decided to come here and try their luck. मेरे आँख में जलन हो रही है बे, पता नहीं क्या चला गया आँख पे। So they shouldn't know where Sachin is either, वैसे right? किसने डेयरडेविल देखी है? सुना हूँ अच्छी है डेयरडेविल्स। I would assume not. नहीं देखी नहीं है लेकिन। Anyway, Mahamatra Saino is still on vacation, so भाई आजकल I'll मार्वल handle इतने this. निकालता है एपिसोड, सब नहीं देखा जा सकता, इवन दो स्टोरीज आर लिंक्ड एंड यू नो बैक स्टोरी तुमको मालूम नहीं चलेगी अगर नहीं देखोगे तो। जैसे तुम्हारी यू नो लोकी वगैरह हो गई, उनकी नहीं देखोगे तो बैक स्टोरी पता नहीं चलेगी। लेकिन कौन इतना माथा बच्ची करे साला, एक एक एपिसोड देखने बैठे इधर का उधर का। Don't you worry. अलग ही कनेक्शन A बैठा couple रहे of ये लोग। kidnappers aren't going to get very far in Sumeru City these days. I have my ways of forcing them out into the open. All of that said, if you're interested in Sachin's story, why don't you... The sooner we ascertain his whereabouts, the quicker we can act to ensure... Fair point. Guess we should start searching for him. None, I'm afraid. I've heard that Alhaitham has now stepped down from his post as acting Grand Sage and is back to being the scribe again. Maybe... Good idea. Okay, we'll head back to the extra... Good night, Draco. Lol, I used to watch every Marvel movie those days. Exactly, पता है movies are okay, but like ये लोग पता है Marvel वाले like वेब सीरीज वगैरह निकाल रहे हैं ना अभी कनेक्शन बनाने के लिए मूवीज ना निकाल के, तो साला एक तो वेट करो एक वीक पहले एपिसोड आने का, फिर उसके बाद क्या कहते हैं तुम देख पाओगे, और उसमें भी तुमको ट्रैक रखना पड़ेगा कि अब ये रिलीज होने वाली है, अब ये रिलीज होने वाली है और अब ये रिलीज होने वाली है, इसी ऑर्डर में देखना। नहीं देखोगे तो तुम्हारा स्टोरी मिस हो जाएगा। बड़ी माथा बच्ची है इसमें। नहीं फ्रैगर नहीं खेलेंगे होंका स्टार रेलम। Hey, Niru? Alhaitham? What? We're trying to track down someone and we need him to... Oh, I see. He's always the first to leave after the competition ends, and he never tells... Huh. Yeah, actually... Let me think. To be honest, to him, being a commentator is just extra work he was roped into. Do you guys know of any places he'd go after work?
Ooh, maybe. Paimon remembers that his house isn't that far from here. सबसे बेस्ट ब्रेकिंग बैड देखो। अरे बहुत, अगर तुम पता है तुम मार्वल की एक वेब सीरीज और मूवी को अगर इग्नोर भी कर दो ना, और उसके अलावा तुम लाइक बहुत सारे, कहाँ पे है इसका, लाइक इग्नोर भी कर दो और कंसिडर करो कि तुम लाइक बहुत सारे एक्चुअली में दूसरे वेब सीरीज देख रहे हो। तुम सोचो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा सिर्फ उन्हीं को देखने में। Let's try knocking. No answer? Maybe no one's home. Hello? Oh, it's you two? Oh, Kavin! Come on in, I'll get the door for you. किनको? मार्वल वाले? हाँ मतलब अगर तुम मार्वल फैन हो और मार्वल का एक एक सीरीज फॉलो करते हो मूवीज के साथ, और साइड में लाइक अपने से कुछ अलग वेब सीरीज वगैरह भी देख रहे हो तुम जो आ रही हैं, चाहे वो हिंदी वाली हो चाहे इंग्लिश वाली हो, कोई भी देख रहे हो, तो जो तुम्हारा कितना टाइम उसी में वेस्ट होगा। प्लस एनीमे देखते हो तो और तुम्हारा वेस्ट होगा टाइम। वेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक्चुअली में बहुत ऐसा कोई एनीमे जिसमें लाइक तुमने जिसको तुमने देखा नहीं है। You know? ऐसे एनिमे की बात कर रहा हूँ जो तुमने देखा नहीं है और 0 एपिसोड से देखना चाह रहे हो और 3-4 सीजन है। सोचो कितना टाइम जाएगा तुम्हारा ये सब देखने में। Conscientious about this. So, what happens if someone comes inside looking for him while you're at home? लोकी की लेकिन एक्चुअली अच्छी थी मार्वल की सीरीज, पता है धीरज? मून नाइट वाली भी अच्छी थी। It's fine as long as I stay in my own room. Anyway, why would someone just barge in here looking for him? Fair enough. What do you think? Who knows what he does in his free time? All that matters to me is that he's out of the— I wouldn't call it that. He's just incapable of saying anything pleasant at all. I told him how the second round went. I won the lot draw, remember? Because of good karma, of course. But him, being him— you wouldn't believe what he said after I was done. You're always quick to remind me that you're my upperclassman, and yet you do not problem solve in the manner becoming of an upperclassman. This begs the question of why we attach prestige to seniority at all. What does he mean, manner becoming of an upperclassman? What, am I supposed to earn the title of upperclassman? And he didn't stop there. I'd encourage you to reflect on why you've ended up having to rely on luck every round. Frankly, it's incomprehensible to me how you've managed to make it to this age without acknowledging the proverbial elephant in the room of your life. Yeah, that does sound like something I'll hate. I've had it with him. Every time I talk to him, it's the same way. He finds a way to infuriate me every single time. Anyway, the disdain is very much mutual between us, so I'll be moving out as soon as possible. I'm actually packing my things right now. He'll have to get used to doing his own cleaning and tidying from now. See those perfectly hung paintings on the walls? They're coming with me too. If his life wasn't utterly devoid of artistic sensibility already, it certainly will be after Wait, you're moving out already? But the Well, obviously I can't just yet. I'm just packing early to get ahead of the I've got my new place picked out already. The moment I have my hands on the prize money, I'm going to buy it and move my things right in. It'll take me 3 days tops to move out of here for good. I now know what I have to do to achieve this goal. No matter what happens in the third round, I will win. I will emerge triumphant. Well, we'll be rooting for you. But are you sure you'll be all right? In what? Layla said that she thinks you'll get caught up in internal conflict. Meaning what exactly? Oh, don't tell me you think I have serious personality flaws too. Oh, we didn't say that. But think about it. You say you want to win, but you also turned Farozan down when she offered to give you her points. Plus, you took it upon yourself to help those desert— Wait, what's so unusual about all that?
I gave you my reasons. I would have felt guilty otherwise. Where's the conflict in that? Why would you feel guilty? Well, when you put it like that, yes, why indeed? It's a good question. I Wait, guess ये it's just in my quest nature. के second part का Plus, part है if क्या I ये just did धीरज? nothing, ये then जो मैं there'd कर be रहा no हूँ escaping the blame if something bad came of it later down the ये line. part 3 चालू हो गया है अभी. But thinking like that all the time must make your life so exhausting. Not to mention that by helping out, you put yourself at risk. Fainting in the middle of the... It's complicated. Look, let's maybe leave this conversation for another time. What was it you needed Alhatham's help with anyway? Sachin. Huh. He did. I remember he brought a few documents home that day. He was thinking out loud as he looked through them, making some notes and doodling as he went. He even suggested that I should take a look, but I didn't. Give me a moment. Let me go. Ah, this is the one. You sure he'd be okay with this? With taking liberties? He's certainly okay with helping himself to my beer whenever he pleases. And anyway, he did ask me if I wanted to read his notes. I didn't see the point at the time, so he just left them on the side. He doesn't leave documents lying around unless he's okay with other people reading them. It's fine, I promise. Cool, if you say so. Investigate the document. Sachin was born to a wealthy family. His father Rajput was the renowned merchant in Sumeru. Okay, Rajput भी डाल दिया. With many properties to his name, at the age of 9, Sachin enrolled into Bahumana and achieved excellent grades. At the age of 15, he completed all his courses and graduated first in class. His accomplishments greatly lauded by the sages. At the age of 16, Sachin ventured out and began to research the local environment and customs, and his travel took him throughout the Sumeru's rainforest and desert. When Sachin was 23-year old, his father Rajput passed away. Sachin returned to Sumeru city to take over his father's business and spent 2 years here. At the age of 25, Sachin once again ventured into the desert to conduct field research. Records show that he traveled with the caravan, lived in Aru village for a period of time. At the age of 32, Sachin returned to Sumeru city. He looked withered and weary. His mental state is insane. Much speculation arose amongst the outsiders, but Sachin locked himself in his room and did not respond. At the age of 33, Sachin entrusted all his properties to Academia and pledged to donate all proceedings to Academia. He then wrote a contract regarding the use of the proceeds and property ownership. The following is an excerpt quoted from the Sachin when the contract was signed. A minimum of 30% of all revenue generated from the business will be used to fund prizes for the Inter Darsan Championship, which will encourage young prodigies to actively participate in competition. I will also be donating my entire collection, the most prominent items of which the Diadem of Knowledge will serve as a symbol of great honor in Inter Darsan Championship. Only the winner of the competition may wear it. In addition, Academia is only given the right to maintain and manage my properties. Ownership of them does not belong to Academia, nor does it belong to me. Each year when International Championship is held, I will keep a close eye on each candidate. If I particularly identify with a participant, I will reveal myself. I will then bequeath all my wealth to this individual whom I judge worthy of acknowledgement. They will have the user's right to all assets and proceeding under my name. I hope the Academia will respect any and all decision made by that person. After the contract came to in effect, Sachin returned to desert and continued to investigation, but there has been no word from him since then. Many claimed that seen him in the desert, but none of them claimed have to be verified. 20 years have been passed since then, which means he should be now at the age of 53 or 56, I think. That was a lot of information. So, to sum up, Sachin, he even said that if he really liked one of the... What? Are you all of Sachin's wealth? That's more than I could spend in a lifetime, surely. Heck, if I got chosen, I'd be able to pay off all my debts, then buy a new place, and still have cash to burn. I could build another Palace of Alcazar's Array. Except this time, I'd make it 10 times. Oh, then there's that new project in Port Ormos, of course. The bridge renovation.
To do it properly would take upward. Hey, snap out of it! You're getting way ahead of yourself there, miss. You're right. First, I need to focus on winning and moving out of this. Huh? Wait a moment. There's a loose slip of paper tucked in between. Did Al-Haytham write this? It looks like he was jotting ideas down as he was thinking things over. Sachin, dead or alive, unknown. And diadem of knowledge. It seems these things are suspicious here right now. वो crown जो है और सचिन दोनों suspicious Some हैं. of this stuff is just plain incomprehensible. Let me see. Huh. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. That's a rough translation anyway. I can't guarantee it's... There's another smaller line of text underneath. Huh. Wow, it's so cool that you can actually read. We worked together on a project once when we were students. The title was Decoding the Runes and Architectural Philosophy of the Ruins of King Deshret's Civilization. I had to... Oh, interesting. So, any idea what Al-Haytham meant by all this? Who knows? The way his mind works is one of the great mysteries of the world. Fair enough. Well, guess we've learned all we Let's can hope here. Arab made some progress. Yeah, he better catch those crooks. But until then, Okay, Act 2 end हो गया इधर पे. Seems like Act 3 is going to be a big one. Little decisions. He's still thinking about Sachin. Did you leave these notes there on purpose? Or was this sheer coincidence? No. But if it wasn't a coincidence, then... Wait until following day 7. Let's go outside first. स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है एक्चुअली में लाइक आई थिंक सचिन मर चुका है आई फील लाइक सचिन इज डेड राइट नाउ विच वी सॉ इज बेसिकली आफ्टर इमेज थी सचिन की तो मोस्ट लाइकली सचिन मर चुका होगा मेरे को ऐसा लगता है ये लास्ट पार्ट कितना लंबा है इतना ही है इससे छोटा है Simon just heard that the Matra have arrested some Aramites who snuck into the city. Maybe they were the ones plotting to kidnap Sachin. Let's go to the Academia and check with Arav. फ्रैगर तू तो कर लिया बता कितना लंबा है अगर पाऊंगा आज खत्म इसको पार्ट 3 को कल से इवेंट चालू करना है क्योंकि मुझे 9 दिन ही बचे हैं क्योंकि You're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. What did you find out? मैंने थर्ड वाला नहीं किया Well, lots of unexpected... The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with... It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Sure, let's go get to the... मेरा भी बाकी है लेट्स सी कितना टाइम लगता है कल तो वैसे भी छुट्टी है तो कर लेते हैं इसको ख़त्म करके सोएंगे आज फिर कल हम मोस्ट लाइकली इस पर लविस करेंगे एंड परसों इवेंट ख़त्म हो जाएगा ये वाला भी Seems like किसी ने मार दिया है इनको आर्माइड्स को Are you sure this is the right place? Something feels off.
All of these Ermites are dead Positive. right now. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. I think ये Wanderer का किया धरा है. Wanderer ने पेला है यहाँ पे इनको. Boss, we got more company. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? With who? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started Flying throwing brat. punches. After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. Wait. इनको पहले वॉन्डर ने पेला है, फिर अलायतम ने पेला है. अभी हम पेलने के लिए आए हैं. इनको पंचिंग बैग बना दिया हम लोगों ने. I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Jawani. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance. By rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. Were you seriously planning to? Of course! Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadow? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. No, the old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. He's probably cooped up somewhere watching all this go on and laughing. I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. What do you know about Diadems of Knowledge? Diadem of Knowledge? You mean that thing he donated to the academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean, something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks. Do you still have any lingering concerns? The Diadem of Knowledge. Yeah, Al-Haytham's notes do mention that Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we... That makes sense. Okay then, let's... करीना के पास जाना है अभी. Wait, what? जगह अपने आप चेंज कैसे हो गई? यहाँ पे एक भी एरमाइट पड़े नहीं हुए हैं अभी. सारे एरमाइट गायब हो चुके हैं. ओल्ड एरमाइट्स जो घूमते थे वहाँ पे, वो भी स्पॉन नहीं हुए वहाँ पे.
finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap... But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like... The diadem? The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? Some new information has come to light. Okay, here's the situation. The Diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the 3rd round. In the 3rd round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the Diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. We might not make it in time. We have to give it a I'll mark shot. the Diadem's location for you. Please head there immediately. Alright, let's... That's weird. मवीतिया फॉरेस्ट में है। अच्छा कट सीन यहीं का था ना, मवीतिया फॉरेस्ट का था। इनकी रेस का जो कट सीन था ट्रेलर में ना दिया था। ऑब्वियसली कैमरा इन्होंने मोड़ के पूरा गिरा दिया मुझे नीचे। मैं उससे बुढ़ाऊ से बात करने जा रहा था ऊपर, क्या पता साइड क्वेस्ट खुल जाता है एक और मेरा, क्या पता अपडेट के बाद कुछ नया ऐड किया हो इन्होंने। Uh-oh. This place looks empty. Did someone already take it? ये लोग बहुत दौड़ाने वाले हैं, बहुत टेलीपोर्ट कराएंगे, मैं बता रहा हूँ। हद से ज़्यादा टेलीपोर्ट कराएंगे। यहाँ पहुँचा दिए अभी। Oh, looks like Layla has seized the diadem. But getting to the goal won't be easy. That guy enters the fray. बोला ना हेलीकॉप्टर बन के फुर्र करके उड़ते फिरेगा ये। Horizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. It's Kave's toolbox! Throwing the diadem to its owner! Yes, that's right.
Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Roses Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong. वेट इसके अंदर इसकी आत्मा है इसकी आत्मा है इसके अंदर व्हाट इसकी आत्मा है इसके अंदर At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Come, Kave. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once owned. We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. मुझे एकदम से आवाज क्यों कम आ रही है? Pay attention and bear witness. Didn't read my chat. Ignore कर दिया मैंने हरीसफ, sorry. You have all performed outstandingly in this Interdarshan Championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kave. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Me? Similar to you? Why, yes. Both of us ये have तुम the लोग को भी आवाज कम आ misfortune रही है to be मेरे को ही आवाज idealists. कम आ रही है इसकी And that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources, robbing of merchant caravans, exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party. ये तुम लोग को भी आवाज कम आ रही क्या? Sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the Academia As I thought. कैरेक्टर की वॉइस सही है, वो सचिन ही थी मैं बोल रहा है. प्रॉब्लम इज विद द सचिन.
I don't know हरी सब क्या कॉमन है उनके बीच में. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे अलहाइतम जो है, अलहाइतम ऐसा लग रहा है अलहाइतम पता है कावे का काटना चाह रहा है, बहुत जोरों से उसको चुल्ल मच रही है. वेरी डार्क जोक हरी साहब, वेरी डार्क जोक. ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बहुत चुल्ल मच रही है इसको अलहाइतम को एंड काटना चाह रहा है, पता है अलहाइतम उसका कावे का मतलब कावे को पैसे वगैरह मिल रहे हैं, स्टेट वगैरह मिल रही है, उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल रही है, वेल्थ मिल रही है. अलहाइतम को जलन हो रही है तो बेचारा काटना चाह रहा है कावे की. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब कटने वाला है यहाँ पे कावे का. वाह वाह हरी साहब वाह. मेरे को हंसी नहीं आई हरी साहब. Yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment. Part of my investigation into human nature. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, my research will have progressed. I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history. And I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I reached cause you suffering? Or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at our... Huh? I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. He is smiling right now. He is smiling right now, which means अगर उसने पहन लिया होता तो मे बी कावे को नहीं मिलता उसको. आई थिंक कावे को नहीं मिलता. आई थिंक वेल्थ वो हंस रहा है, विच मीन्स कावे को मिल गया है सब कुछ. Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tainari. Don't worry about... Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Inter-Darshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt,
Can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? मत करना अलायतम पता है सच में कावे का काटने वाला है कावे का लिटरली काटने वाला है अलायतम Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Rejecting the world will achieve nothing. He and I, we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. इन्होंने भाई बिल्कुल मतलब कावे को प्रॉपर रोल दिया है किस मतलब अभी तक ऐसा मतलब कोई इवेंट नहीं आया जिसमें लाइक 4 स्टार को प्रॉपर मतलब सेंटर रोल दिया हो मतलब स्पॉटलाइट दी हो कावे को प्रॉपर स्पॉटलाइट दिया इन्होंने इस इवेंट में मेरे को जानना ही नहीं है हरी साहब मेरे को जानना ही नहीं है We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine, but it's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do. Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kave, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. What? Please. I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Kave. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Looks like the ceremony will be held at the main venue. Let's head over and check it out. Maybe shake the tree or maybe take these nuts, Harisa. You know? Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Interdarshan. Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kave, to the stage to receive his award. Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. However, we have just received word that Kave has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is getting donated? So much, Mora. And Kave's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kave? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all the— I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. Because he didn't had any sperms to donate.
Maybe Harisa. Oh, Kaveh, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kaveh one last big round of applause. I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire— That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole... भाई तो काफी जल्दी खत्म हो गया कट सीन यहाँ पे स्टोरी लगा नहीं था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा I think I'm quite good at आधे giving घंटे में खत्म कर speeches, दिया but मैंने ये this one was just so Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know. I suppose. Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Could you pass it on to him for me when you next see? Whoa, whoa! This is a super big deal. You should do it yourself. Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair! फाइमोन उसके बाल पकड़ के ले गए कावे के ओ भाई ये सही था ये बहुत सही था भाई कावे के बाल पकड़ के ले गई क्या कहते हैं फाइमोन उसको What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue. What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? Simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. How much? कावे का नहीं किसकी लाइट गई तेरी लाइट गई है फ्रैगर हमारी मेरा सही चल रही है स्ट्रीम तेरी प्रॉब्लम है जो भी है भाई कावे की पर्सनालिटी क्या टर्न लिया जैसे 1 मिलियन मोरा बोला है If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million Mora for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. पढ़ूंगा ही नहीं जोक तेरे हरी सब जोक मेरे को क्या कहते हैं YouTube डिटेक्ट करके वो दे देगा क्या कहते हैं एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा मेरे वीडियो को मैं नहीं पढ़ूंगा तेरे जोक्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तेरे जोक्स Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splat. But really, it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. Sounds like you're speaking from personal experience. I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the Mora. Thanks to you, I have achieved my goal for participating in this tournament. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over.
In fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale, too. Well, this is what they call all... Paimon wonders how the other contestants are... What is the bill? I don't know हरी साहब क्या है वेस्ट में बताओ क्या है वेस्ट में चैट विद दार्शान रिप्रेजेंटेटिव समझ में नहीं आया तेरा जोक मुझे सच बताऊं तेरा जोक नहीं समझ में आया मुझे सच बता रहा हूं मैं तेरा जोक ही नहीं समझ में आया मुझे भाई ये हैं कहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया मैं घूम घूम के परेशान हो गया दिख ही नहीं रहे कहाँ पे हैं वाह वाह हाँ फुल सेव तो वैसे भी कर सकते हैं बॉल्ड हेड तो वैसे भी जा सकते हैं क्या जरूरत है तुमको कैंसर की गुड क्वेश्चन फ्रैगर गुड क्वेश्चन गंदा जोक हरी सब छी गंदा जोक I'm telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Really? Well, then, sure, Madame Farzan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farzan! Nilu! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Madame Farzan here is pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base. And embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. Oh, wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. Don't worry. This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. My girlfriend asked if she looked pretty, so I said she is like sun. नहीं समझ में आया जोक मुझे हरी सब मुझे समझ में नहीं आया तेरा ये वाला जोक भी Wait. Madame Farzan's right. That style is a classic and used to be mainstream fashion. But these days, there's some other options too, if you don't mind. How about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, I know a few places where I can get a great bargain. Sure. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan? Come quick! She's over here! Who are you? We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could She sign said, up for? oh that's cute, so I am center of my work. I said no, you are painful to look at. कैंसर भाई हरी सब कैंसर भाई कैंसर हो गया है हरी सब को आज ड्रैको वाला जोश चढ़ा है इसको Very welcome to join. वो डार्क वाला
That's great! We can't wait. What's your area of research? I'm from Haravatat. Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. कितना जल्दी I knew पलटी. it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan, and I'd like to learn from you for a while if possible. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look for— I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. I My don't jokes quite are better than understand Draco. what happened there, but congratulations, I think. But your jokes are very dark, so they are very much not understandable. Harisa. हाँ और ये स्क्रीनशॉट फ्रैगर ड्रैको को भेज फ्रैगर जल्दी से. Traveler, Paimon, would... Sorry, we can't. We've got a meet with Kave later, and we have to check in with all the other Oh, by the way, have any of you seen Hat Guy? Or I don't know where Hat Guy went. We just saw Layla not too long ago, but she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her to enter the competition. Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they If you don't come to Samara City often, classic floral designs aren't a bad choice. Those don't really go out of style. And of course, since you're putting this on your body, you need to consider the type of fabric the clothes are made from. Some materials might look stunning, but they can be terribly uncomfortable to wear. Agreed. After all, is fashion not the constant phasing in and out of classics? In that sense, you could always consider the style I suggested too. Wait, sorry, ma'am, but I think it could be quite a while before the style you recommended comes back into fashion. I actually think the style recommended by Madame Faruzan is... Isn't it just? You have a I think I might need some more practice if I wanted to embroider my own complex designs. Although, I'm no beginner with a needle and thread. More like a friend with intermediate? The classics are the best. Period. Dark and vulgar. Who said that? Harisa? What is the difference between women and light bulb? If you're not sure what to do next, how about I Both take a lit little up, walk? I guess, Harisa. I see everything. You and Candace are both pretty tall. That means they have a lot of options when it comes to clothes. These clothes all seem a bit too flimsy. Is there anything sturdier? ये कहाँ पे है? अच्छा डिफरेंस बोला था. I thought you said similarity. तब भी मैं कंफ्यूज हो गया. डिफरेंस बोला था. ओके. मुझे समझ में आ गया Sorry, फ्रैगर लेकिन. everyone. I could have... Oh, stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first two rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. Aw, I just got lucky. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there.
You're amazed. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Oh, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a genius. In the second round, for instance, I dozed off and somehow found myself beside the device. बोल रहा है when मेरे I को भी समझ में आ गया came लेकिन to. श्योर नहीं हूँ ये कैसे समझ में आता है हरी सब ऐसा भी होता है कि ऐसा समझना भी होता है कि जिसमें श्योरिटी नहीं होती है Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out to celebrate, and that's fine. Let's go. Cheer up, Layla. Looks like things are going well for Layla. We haven't seen Hat Guy since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better go meet. there are only two things either you can be sure or either you can't be unsure what's that you are sure but you are not sure ये क्या होता है हर सब बीच का बिल्कुल 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 फ्रैगर को रोस्ट करो हर सब मैं तो बोलूँगा he deserve that you know इसके पास न्यू रेसिपीज आई होंगी ना लेट मी सी हाँ न्यू रेसिपी आई है फतेह करके आई एम नॉट श्योर व्हाट्स दैट फतेह करके जो आई है बट ठीक है न्यू रेसिपी आई है इनके बीच में कुछ चल रहा है क्या मेरे को देखना है I can't get out of the city fast enough, and you think I'd want to join the Corps of 30? Seems like I'll be staying up late again. I thought इनके बीच में कुछ चल रहा है I see everything. Narrow-minded Haravatat. क्या बोला बे थप्पड़ मारूंगा खाल Foolish Bahumana. ये देखो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं आमने सामने बैठ गए रिसर्चर्स Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. Don't worry, I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. Oh, Traveler, Paimon, over here! Ooh, look at all this. Good food, here we come. I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? Faruzan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Who knows where he's gone? Al-Haytham's gone missing in action, too. Huh. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. That guy. Where the heck could he have gone? I still have... Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. पाइमोन ही अकेले खा गई होगी पूरे You टेबल shocked तो me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value.
But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the Madra would step in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you. That means he knew what he was doing. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here. Yep. No dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. He's here? Where? Why didn't you tell me? He lives rent-free in each of our hearts. फिर साइनो ने जोक मारा. Shujha serve with popcorn right now. Yep. अरे बिल्कुल आ रहे हैं. अरे सब. Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right, enough about Alhaitham. Tainari, did you achieve what you wanted out of the championship? I did. In the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, are you free next month? You should come along. Maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture. Or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. I'm full. I'm super full, too. If only we could eat like this. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. Sounds good. We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here, too? Oh, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kaveh, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? Since everyone is free, why don't we... Eager to show off your new limited edition card? Not to show off. This is my way of thanking you for your help. Only my best... All right, sure. I didn't bring my deck with me, though, so I'll need to borrow one. Actually, Master, I made a new one a few days back. Don't tell me you've been spending all your study hours playing cards. Come on, no need to be so stern. They do say that your innate interests are your best teacher, don't they? क्या देख रहे हो रे? चारों बैठ के नहीं ढाको. I see everything. This was some pretty successful ordering today. Not a dish wasted. Oh, I almost forgot. I should order a couple of extra things to take back home. With this limited edition card in my deck, I have reached peak connection with my cards. This is my most worthwhile purchase in quite some time. I wonder when Kaveh will be able to pay off his debts. I wish him the best of luck. It's been so nice not having to study these last few days. I hope I don't fall behind. Wait.
just can't beat the atmosphere here. Well, it looks like this Inter-Darshan Championship's a wrap. All that stuff with Sachin and the diadem got sorted too. Sachin's How do you research. spell that? Oh, right. Yeah, Sachin said that he placed his research materials at somewhere beginning with but it might be dangerous if someone finds his old research stash, right? Where do you... Holy smokes, you're right! He said he spent all that time researching in the desert, didn't he? Alright then, but... बोल रहा है, धीरज बोल रहा है, अरे क्या जोकर चले जा रहे हैं यहाँ पे. Actually, Harisab, I think you are dumb here because basement doesn't even have a window. So even if I try to jump from basement window, since there is no window, I can't jump from basement. So I think you are dumb here. You are the one who is most dumb here. Didn't expect to run into you here. Oh, hey, Thumb. What are you doing here? And what are you reading? Are those... Sachin's notes? Yes, I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came Wait! So, you've read it already? Are you alright? How do you feel? I think you may have misunderstood something. The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey. Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it hard for them to achieve their goals. Why is that? All important things in life involve other people. As such, it's extremely difficult to live a life that causes no harm whatsoever to हाँ others. धीरज अच्छा है event actually में. Like story wise अच्छा है, I would say. There are some good points as well, and they have properly displayed the personality of a character and pros and cons of certain characters in this story. And उन्होंने actually कावे को जो कि 4 स्टार है उसको स्पॉटलाइट दी है जबकि नॉर्मली मिलती नहीं है. लास्ट टाइम मेरे को जितना याद आ रहा है कोले और सुक्रोज को मिली थी स्पॉटलाइट, लेकिन उतनी भी नहीं मिली थी जितनी इसमें मिली है इस बार स्पॉटलाइट. तो आई थिंक दे हैव प्रॉपर्ली गिवन चांस टू सम कैरेक्टर्स. दे इवन considered all the 4 star 5 stars of that reason to be present in that event and to be the part of that event's cutscene. So I think they did, उन्होंने बहुत सही काम किया इस स्टोरी में. Hello Gurudeep Devnath, welcome to the stream. Hello, I'm new. Welcome to the stream Gurudeep. नहीं मर चुका है सचिन. If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along, and that reality is like the material here. Objective. So, what are your thoughts now that you've read it? As a scholar, Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity.
experimented extensively with reliable results, and drew logical conclusions. In that sense, one might say his views were. So, people are bad? And things can only ever get worse? That is not a question for me to answer. Someone else will arrive. All I will say is that the world is not built on correctness alone. Sometimes, being correct means nothing at all. Those words you wrote among your notes. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps by their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. What is your AR? Thus, Mine they shall is never reach AR-16. even the borders of truth until they wipe away the ignorance that blinds them. स्पॉइलर दे के नहीं मारा है मुंह पे। तू धीरज काफी देर से कट सीन देख रहा है तो तू चुपचाप तो तू बोल ही मत कि तू भाई स्पॉइलर दिया हूँ तेरे को, ठीक है? तू खुद ही स्पॉइलर ले रहा है स्ट्रीम देख के। और रही बात, तो स्पॉइलर नहीं दिया हूँ, आई जस्ट यू नो गिवन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन की एक्चुअली में इन्होंने क्या अचीव किया है, समराइज किया है एक तरह से। मैंने कंक्लूड नहीं किया है, समराइज किया है। I've never been able to agree with Cats certain having philosophies. sex. Even Sachin himself आवाज आ struggled रही to है उनकी। comprehend the notion of sacrificing oneself for the greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters. And the way we see the... Alright then. I got what I came for. These research... Wait, so you came here just हाँ to यार read 16 this है stuff? गुरुदेव। You missed out on a big get-together, you know. Get-together? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of... Guess what? Kave treated everyone this... Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. And there he goes. Well, it seems like he really wasn't affected by this research. He said that someone else would answer our questions. Who do you... I think he is talking about either the hat guy or maybe Nahida. Nahida ही आई है यहाँ पे। I was sure कि ये लोग इन्हीं की बात कर रहे हैं। Traveler, Paimon, you're already here. Nahida! Oh, and hat guy. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? Did you know that there was something wrong with the diadem from the start? And if so, what? Because Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that now. Why? Don't you like it? Well, anyway, if Sachin's chosen successor hadn't been able to handle his research, or if it had brought pain to more people, he would have intervened at a suitable moment. And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work. Pretty hilarious. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally. But it looks like that didn't work out. That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is more reasons to be indebted to you. Nahida, what did you mean by Sachin's research is not mistaken? Does that mean that you approve of his research? Put it this way instead. Truth to me is like a shroom boar. Some people only see the mushroom on the shroom boar's back, and they conclude that the shroom boar is a mushroom. Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom boar is a boar. Still others look deeper inside, and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them... Paimon kinda gets it. But the world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere on the path toward truth. Within the confines of our limited knowledge, some may blindly believe in the beauty of this world,
and others may focus only on. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become. But of course, I don't mean that as a criticism or a call to action. Ultimately, my duty as the god of wisdom is to guide every form of wisdom. That was a long speech. So what are you... Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will... But even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not... I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also find a way out from the despair as well. Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. You name Scaramush Shashibaka, why? Because he is Shashibaka. He's very sus right now. You know, he do things in a sus way. And he already he always have some kind of motives in his mind. That's why he's very sus. You think so? So he's Shashibaka Well, now. to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate, and learn how best I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. भाई नईडा सच में पता है लाइक जितना गुस्सा रहता है ना, क्या कहते हैं ये बॉन्डर के अंदर जितना गुस्सा रहता है ना, ये सारा गुस्सा पता है बाकी लोगों पे निकालता है जो इसके आसपास रहते हैं. नईडा इसको एक्सप्लॉइट करती रहती है. मैं बता रहा हूँ गलत हो रहा है ये इस बॉन्डर के साथ. ये गलत हो रहा है वॉन्डर के साथ. मैं बता रहा हूँ फ्रैगर, आवाज़ उठानी चाहिए तुमको इसके खिलाफ. बहुत गलत हो रहा है वॉन्डर के साथ फ्रैगर. वेट, ये क्या है? When curtain closes, the incident from 20 years ago. ये क्या है जो दिए नहीं? He is S&M boy. What is S&M? ये क्या होता है? अरे पढ़ना चाहिए फ्रैगर, तुम्हारा फेवरेट है. तुम वॉन्डर की चाटते हो ना, तो तुमको फर्क पड़ना चाहिए फ्रैगर. Tourist exclusive scoop number 1. Do you remember the dilemma of knowledge? Paimon remembers only the champion was entitled to wear the dilemma. It seemed very valuable. Exactly the dilemma that Sachin gave the academia was a rather expensive antique. Yet this very dilemma, after it was donated to academia, was lost by them once before. Huh? Why didn't we hear about this? If everyone knew about this, would my information still be considered exclusive? Of course, this information doesn't come from nowhere. I've got witness too. There is a young fellow named Kashmir from suburbs. If you are interested in delving further, you could ask him. The password is that incident from 20 years ago. Where? अभी कहाँ भेज रही है? Sadist and masochist. क्योंकि फ्रैगर तू ले
क्योंकि तू लेके घूमता वॉन्डर अपने साथ। अब हम उसको वॉन्डर नहीं बोलेंगे तो क्या टट्टी बोलेंगे क्या फ्रैगर? अब तुम वॉन्डर को लेके घूमोगे पूरे टाइम तो वॉन्डर ही बोलेंगे ना हम उसको, कुछ और थोड़ी बोलेंगे फ्रैगर। कैसी बातें कर रहे हो? डू यू वॉच एनिमे, रीड मांगा एंड लाइट नॉवल? रीडिंग नहीं करता मैं, बट आई डू वॉच एनिमेस, बट लिमिटेड वंस ओनली। मांगा भी पढ़ लेता हूँ, फॉलो कर लेता हूँ कुछ कुछ की। गुड नाइट हरी साहब, बट वेरी लिमिटेड हो। I was just a 60-year-old 20 years ago, so I can't remember clearly what happened at the time, but recently I read a diary kept when I was a child and vaguely recalled the situation back then. The Inter-Darshan Championship was held that year. There was a 3 rounds, the last of which was outside the city. I begged my mom to take me to town to see it. When she refused, I snuck out, and then I ended up getting lost outside the city in the middle of nowhere. There was no one around. I grew more and more frightened and began to cry. That's when I saw some strange creatures. I can't remember what they looked like. I only remember how, as a child, I stopped crying at the sight of them. Strange creature, they must be Dharanaras. They took me to the competition. Unfortunately, by the time we got there, it was too late. It was already over. When I saw, just when I was disheartened, I suddenly saw one of those strange creatures slowly dragging a crown along. It was a beautiful crown, shining in moonlight. I could not help but follow it. I saw a little fellow hide the crown in the hollow tree before disappearing. I wanted to touch the crown, but at the moment I could hear the distant cries of my mother. It turns out she figured out I was lost. I got her neighbors to go looking for me. I never got to touch it. It wasn't until I was older when I saw Dam of Knowledge at the International Championship that's when I realized it was the same thing. Alright, do you remember what is the end up? It's probably in the Avidia forest, but I have been back a few times. I haven't found anything. No one would believe me if I told them. Alas, even I can't remember it clearly. Perhaps it was a dream I had when I was a child. Well, should we go look for it, traveler? अब निकालना है तो पूरा मैप उसको ही घुमाऊंगा ना। तो तुम घुमाओगे कोऑप में लेके तो तुमको हम फ्रैगर थोड़ी बुलाएंगे, वॉन्डरर ही बुलाएंगे ना। अबे यार नहीडा बहुत छोटी है, उसने मिस कर दिया वो क्रिस्टल फ्लाई, ऊपर उड़ के निकल गई वहां से क्रिस्टल फ्लाई उसके ऊपर से। तो इट सीम्स देयर इज मोर देन वन डायलम ऑफ क्राउन्स, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकेडमिया वालों को ट्री के नीचे से मिला है वो अगर क्राउन, तो वहाँ नहीं होगा। अगर वहाँ पे क्राउन हुआ विच मीन्स देयर आर मोर देन वन क्राउन्स इन द गेम। No, Fragger, no. There is a hole in the tree. It seems completely empty. There is nothing in it. Huh, wait. There is a note there. The good Nara taught Arakasapa how to read. Arakasapa must protect the good Nara. What's with this supposed to mean? अब डोरी इसको वो करेगी, डोरी इसको एक्सप्लॉइट करेगी, बोलेगी 1 मिलियन मोरा चाहिए अभी मेरे को तेरे से। अब 1 मिलियन मोरा मांगने वाली है गाइस डोरी हमसे। I have the latest update from Academia's extravaganza. Would you like to hear it? Isn't Lord Sangama way generous? Do you guys remember Sachin?
The guy who sponsored recommended Paimon heard that money and dilemma of knowledge came from him. Bingo! In the fact, not long ago when I was doing business in desert, I met an old businessman. Guess what I got from him? A dealer's ledger. With it, I can avoid dangerous areas in the desert and go to more precious. Of course, the most important thing is that ledger mentions Sachin. It turns out that Sachin had been to the desert to investigate the people's local condition and customs. He also had cordial exchange with the traveling merchant in the desert. Much of the text is lost, but this is the first-hand account of the big sponsor behind the economic. Would you like to take a look? Sandstorm are raising the caverns has stalled. We ran into the scholar calling himself Sachin. He said he could sponsor the caravan provided that we. This is a trial of human nature with real plunder. There was nothing we could do, no one could withstand. Even if I could do it all over again, I could never have taken that money. Then they wouldn't have to die. I wouldn't have been living like this. The fate worse than that. People are the most terrifying animals in this world. ब्रोनियर आंट के लिए है नहीं नहीं फ्रैगर नहीं यूज करती है मोर उतने मोरक का फ्रैगर कहीं ना कहीं क्या करेगी डोरी उसको अपने पैट को भी देना होता है ना मोरा दिस इज ऑल हार्ड टू अंडरस्टैंड डोरी व्हाट डज इट ऑल मीन व्हाट डज दैट ऑल मीन आई एम अफ्रेड इफ यू नीड टू एनालाइज इट विल कॉस्ट एक्स्ट्रा मिलियन मोरा forget it then well since you are not paying it's that will all for Dory's special use but let me give you a hint there should be someone here who has been to a lot of academia extra bank and jazz perhaps you could talk to them okay I don't know what that's supposed to mean though but it seems we have to go to the Aru village now Alas, seeing this young child, I can't help but reminiscing about the past. The International Champions has been always stage for young talent. Unfortunately, not every genius will be successful eventually. Geniuses are the most stubborn and cold, find it hard to understand the pains of others. Empathetic people, on the other hand, often fall into self-doubt and depression. People who are not formed can only still stand still, while people who are determined but walk down the wrong path refuse to look back. There is a lot to think about here. इसका नाम वासुदेवा है एलान कब आएगी एलान नेक्स्ट ईयर आएगी अब फ्रैगर तुम्हारे लिए इसका नाम इस बूढ़े बंदे का नाम ये वासुदेवा है एक्चुअली I don't see anyone. ये अच्छा ये Hubisca ये कैसा नाम है Hubisca? For this year's Inter-Tarzan champion, my favorite has to be Sino. Aside from his skill, Janamatra, looking back at tournament history, Spantamar Darsan has been the highest percentage of champion. Many people say that Spantamar Darsan produces many talented people such as Cyrus, Rusika, Lisha, Sino. Wait. साइरस वो है ना जो क्या कहते हैं तुम्हारा मॉन्स्टर्ड में है एडवेंचरर गिल्ड का लीडर एंड लीजा इज आल्सो एडवेंचरर लाइब्रेरियन है हमारी लीजा आई हैव नो आइडिया व्हाट हु इज रुचिका दो विच मींस साइरस भी एकेडमिया से है एंड ही इज आल्सो अ चैंपियन ऑफ इंटरडासान चैंपियनशिप लीजा भी चैंपियन है साइनो चैंपियन नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली किसने बोला पूरे क्वेस्ट में नहीडा नहीं आई फ्रैगर कटसीन में नहीडा नहीं आई तेरे लिए क्या बोल रहा है
The brighter the talent, the sooner the game will lose its suspense. The most exciting competition was still 20 years ago. At that time, my friend also participated in the event. In the game, I went there to cheer for him. The last round was played in a video forest. In the end, no one dared to approach them. No one knew what was going on in the depths of the forest. Then I heard Academia shut down the competition. Later, the International Championship removed many of the event in which people fought to death, discouraging people from desperate enough to do so. Go to Academia and look for विकास. ये कैसा नाम है? विकास. क्या पढ़ेंगे इसको? मेरे को समझ में नहीं आता है. विकास पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे. मैंने मिस कर दिया शायद. हाँ, तूने मिस कर दिया. नैडा आके चली गई है कब की. भाई इसमें अभी भी कितने क्वेस्ट बचे हैं? इस साइड वाला क्वेस्ट अभी भी हम लोग सचिन के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. एंड देन देयर इज वन चैंपियनशिप क्लोजर का. कितने क्वेस्ट रिमेनिंग है अभी भी इसमें गेम में? बहुत ज़्यादा क्वेस्ट हैं एक्चुअली, लेकिन प्रीमोस वाले क्वेस्ट नहीं है. लाइक छोटे छोटे साइड वाले क्वेस्ट हैं. The incident from 20 years ago, why the sudden question? Did you hear any particular information? We have heard that Dialum seems to have been lost 20 years ago and some contestant personality has changed. You seems to know a lot about that. Because is there something you are not telling us? Not exactly. I was 5 years old when it happened. How could I know? But there are things I never told anyone. I'm actually a part of Academia Extravaganza planning committee because of the influence of senior colleagues. Their senior colleagues and I met on the trip. He was a bit timid and would always flee and cover somewhere at the first sign of an emergency. One day 4 years ago I said to him, I want to go back to Academia and Academia Extravaganza is about to begin. And then upon mentioning Academia Extravaganza, he got startled and said something about it has nothing to do with me. When I said goodbye to him, he insisted on getting a drink with me. After several drinks, he started talking all sorts of nonsense. I also had too many in my drinks stopper. I didn't really hear him that well. I only remember that he said he lost the dilemma of knowledge for a while he was in charge of distributing and recovering the dilemma of knowledge. That he nearly had a heart attack upon realizing that the dilemma was missing. Unfortunately, finally found it in a tree hall, like the one we saw before. He said that dilemma of knowledge is very valuable treasure, which is recorded in many ancient books. Legend has it that it was built by the famous craftsman in ancient times. Carries a secret that no one knows. Sachin had entrusted the academia to safeguard Dilam. After all, if my senior was responsible for Dilam's disappearance, I could not afford to pay for it with his meager wealth. Even if the loss was temporary, no one should know of it, lest the academia find him guilty of gross negligence. So he covered it up. Yes, it seems that he also said that many people came to inquire about it, including children, but he said that Ilam had never been lost. He was so scared that when things blew over, he quit his job and left the academia. I drank too much that night. When I woke up the next day, he was gone. More thought about it, the more I had a bad feeling that Isu would crop up in the extravaganza if interested to someone like him. I didn't have a job at the time, so I joined Academy Extravaganza Planning Committee. I tried to investigate things on the inside too, but I couldn't find things. And the dilemma was found, and the man whose personality was said to have changed was dead. There was nothing to be found. Still, 20 years ago is still a long time, long enough for people to involve from beginning to long. That's all I know. If you're curious, keep investigating. Maybe one day you will discover the truth.
I do have some information on Sachin. Would you like to hear it? He said he came into possession of an article written by academia researcher. हाँ 3.8 इनाजुमा में होगा. Fragger सही है. He seemed to think. हाँ नेक्स्ट वाले वर्जन का इनाजुमा में इवेंट है. He seems to think it was something precious and refused to show it to anyone, only to let me peek at it at my request. I only caught a glimpse of it, but I saw that it was signed by Sachin. I didn't know who Sachin was, nor did I care. After joining Academy Extra Planning Committee, I found that he was the important member of Bahumana Darsan who sponsored the event. If you're interested, you can find Ermite Commander in the desert. He is usually in the Valley of Dahari. भाई कितना लंबा क्वेस्ट है. इधर से उधर भेज रहा है मेरे को. इसके पास जाओ, उससे बात करो, उससे बात करके फिर इधर आओ. यही चल रहा है इनका तब से. गोल गोल घुमा रहे हैं ये लोग. वो this guy looks real fierce. Either way, say your piece and or leave. I have no time for you. Actually, we have heard that you have such an article on you. We were wondering if you could have a look. It seems like you guys really don't know. Sometimes ago, I had the article appraised and turned out it had nothing more than a valuable personal travel journal. Is a little of a little. He hired my father to keep him safe. That such a fellow would often walk and ask, write and mumble. There was one time his paper were blown away by the wind. He said it was no big deal. My father, however, thought that thing written by intellectual must be valuable. So he looked around for them at the night with torch. None among my family can read. My father cherished this article and then passed it to me. I had no idea it was completely worthless. Sound unfortunate, but do you still have it? Once the god reigned supreme, all life flocked to them like sheep, seeking shepherd, and those who suffered did so in silence. Now divine power has dwindled, while human wisdom has blossomed. However, those who suffer face suffering still. There is a still saying in Liu that goes, life is like lodging at an inn, and in Azuma all things are but void. It hurts every time I read these words. I try to seek the reason for this. The wheel of time turns and they constantly throughout Sumeru's history is human nature. Since arriving the desert, I have conducted total 64 experiments over the course of 7 years. The men are like prisoners or captured animal feeding on each other happiness until one is doomed to eternal torment. But if this is what the world is, what is then the meaning of world? The future is to the present and present is to the past. Peace was never an option. Conflict is an eternal truth. Everything from my knowledge, my wisdom to my life is but nothingness. हाँ पता है मुझे बाइजू की पूरी स्टोरी बाकी, बट मैं नहीं करूँगा. स्पीड रन नहीं करूँगा. फिर बोल रहा है जाके डोरी से इन्फॉर्मेशन लो. वापस से बोल रहा है. अब डोरी पक्का पैसे चार्ज करेगी, मैं पक्का बता रहा हूँ. डोरी फ्री में इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हमें. It's time yet again for the information sale for the Lord Sagmaway. Would you like to purchase the latest report? Let me see if this information isn't that important, then it will go only 500,000 more. Well, it looks like someone saw him in Aru village. I wonder where he ended up. That's all the information you're getting for free. If you want to hear more, you gotta pay 2 million more. I appreciate the patronage. Like, डोरी हमको लीड देती है, फिर हमको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है. इवन दो डोरी हैज़ एन इन्फॉर्मेशन, लाइक बाकी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो पैसे मांगती है. हमको लीड दे के छोड़ देती है. अब हमको ढूंढना है उस बंदे को जिसके पास लीड है आगे की. ये तो बहुत गलत बात है.
अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि सचिन कहाँ गया होगा 20 years ago डेजर्ट में बेसिकली। ऋषि, इसका नाम ऋषि ऋषि रिष्टि है। Back then, life was much harder than it is now. Poverty, disease, ignorance, they are tormented us constantly. The young man, clearly from academia, was a bright future, was nevertheless willing to come here and help us. He taught how to deal with peanut monster, and he brought us a lot of medicine and money from his own pocket, took care of the ill all by himself. It sounds like a great guy. Yeah, too bad the good die young. He always He was always frowning. No one knew what he was worried about. Everyone was wondering if he was going to leave us. This place did not have much means to properly host him. Still, many things he was a bit crazy to begin with. For example, he would sometimes tell children a story about how, as a child, he taught a strange creature to ride. Later, he would often leave the village and explore the desert. Once I asked him what he was looking for, he said he wanted to talk someone from the Nagar something group. What is Nagar something group? Later on, I heard he died in the quicksand. It is said that he encountered a cabin trapped in quicksand on his way back to investigate something. He saved many people, but he himself was unable to get out in time. At that time, there was still a half finished letter addressed to his child at home. After he died, my son took that letter with him, thinking about delivering it someday. Isn't that unfinished letter still here? To live a better life, my son became a mercenary. He was killed in a scuffle a few years ago, and his belongings were taken. Many years have passed in a blink of eye. I wonder how his child turned out, if they hold a grudge against him. अरे हाँ धीरज, ये अभी भी स्टोरी में चल रहा है बकचोदी, इनकी अलग ही चल रही है। क्या बोलूँ मैं, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा स्टोरी। लेट्स सी, कर्टन क्लोजेस चलते हैं, अभी लास्ट बचा है हमारा। बाय द वे डेविस, जग रहे हो तुम? क्या बात है, अभी तक जग रहे हो? अरे काव्य और ललितम यहाँ पे हैं। Where were you while the rest of us were eating together? I don't recall being obligated to report my whereabouts. Did you go find another hidey hole to read in? You need to change your ways, you know. Surviving on meals paid for by you would be harder still. You? Whatever. It doesn't take a genius to guess what you've been up to. You were investigating Sachin, weren't you? It was obvious from your notes. However, I don't believe his research alone would have been enough to pique your interest. His way of doing things is disturbing, while you... Well, to be fair, your philosophy disgusts me too, but you and Sachin are nothing alike. I don't imagine your views intersect at all. Egoism and nihilism are not the same thing. Sachin could be more sacred. Well, based on what I've learned, Sachin and his disturbing way of doing things, as you put it, is very likely to have met your father 20 years ago. What did you say? Wait, so... No. Surely that doesn't mean... Wait. तो सचिन जो है वो कावे का फादर है, एंड सिंस कावे का फादर मर गया था तो उसकी मदर ने फाउंटेन के किसी रिसर्चर से किसी से शादी करके वो फाउंटेन शिफ्ट हो ली थी, which means कावे is his real descendant. So that's why he thought I looked familiar. My father must have gone into the desert due to his influence. I'm afraid so. Good thing I shattered that diadem. From now on, nothing like that will ever have to happen again. The boundaries of knowledge are ever expanding. Someone else will inevitably pick up the same line of research one day, and Vahumana regards it as a reasonable research direction. Oh, not this again. Even if you're right and people are bound to fall into the same intellectual traps, things won't necessarily go the same way again next time. You have to admit that the actions of one individual don't always predict the behavior of the group, and vice versa. Take Sachin, for instance. And so is the one who stopped him. You.
Conflicts of this nature are indeed exceptional, but it will occur again in the future. You said it yourself. The actions of one individual cannot भाई predict the इनकी अलग behavior ही of the चल रहा whole है कुछ group. तो. You know that not everyone would have नहीं chosen नहीं as you कावे did. रियल डिसेंडेंट नहीं है. आई थिंक कावे के फादर को, कावे का जो फादर थे ना, उसको साथ में लेके गया था सचिन. एंड आई थिंक कावे का फादर वहीं डेजर्ट में मरा. उसके बाद कावे की मदर ने किसी और से शादी कर ली और कावे इज लाइक अलोन राइट नाउ इन एकेडमिया. दैट्स व्हाई ही इज लिविंग विद अलहाइतम राइट नाउ. ये हुआ है एक्चुअली में इसके साथ. Even so, I stand by my views. You can. That's fine. We've been arguing over this for years, and I don't hold any hope of you understanding. The issue we're Thanks for letting me know all this. What? I said, thanks for letting me know. Hey! They say that earnest thanks should be given thrice, so one more time. अलहाइतम मजे ले रहा है उसके, और अलहाइतम को रिप्लेस कर दिया इन दो चोमियों ने इतनी आसानी से. Everyone hold hands. खत्म फाइनली क्वेस्ट खत्म गाइस. सिर्फ अभी वो बचे हैं, इवेंट वाले बचे हैं. फाइनली पेन हैज एंडेड. आई एम सो हैप्पी राइट नाउ. आई हैव नो आइडिया व्हाट ऑल दीज आर, बट आई एम सो हैप्पी राइट नाउ. फाइनली खत्म हो गया. भाई फिर फर्निशिंग दे रहे हैं ये लोग. इनकी क्या बोलूं मैं, इतनी फर्निशिंग देते हैं ये लोग. फर्निशिंग ही फर्निशिंग चिपकाते रहते हैं. परसों देखते हैं यार इसको. ये परसों देखेंगे. कल तो वो करना है. कल तो ये करना है अपन को, स्पाइरल अबिस करना है. But it doesn't seem like it's going to be difficult this time. हाँ क्वेस्ट हो गए बट इवेंट्स बाकी है अभी पूरे. अरे कर लिया जाएगा फ्रैगर. 1 at a टाइम करेंगे अपन. एक दिन में एक करेंगे. 6 हैं, 6 दिन में 6 खत्म करेंगे. अभी देखो बहुत टैलेंटेड इंसान है भाई हम. देखो एक दिन में एक खत्म करके दिखाएंगे. आज जैसे क्वेस्ट खत्म किया, कल एक पूरा कर लेंगे अपन. क्वेस्ट का स्टोरी लाइन, एक क्वेस्ट बोल रहा हूँ, इवेंट का जो भी टास्क हैं एक ट्री के. फिर दूसरी ट्री के ब्रांच चालू करेंगे अपन. नहीं फ्रैगर कल करेंगे. अभी हमको नींद आने लगी है. आई थिंक मैंने सुना था अभी कुछ तो क्या कहते हैं. हाँ आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है बाइजो के साथ. हाँ बाइजो के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है. तो आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव अस सम प्रीमोस फॉर दैट. On your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. हाँ टैलेंट है अपने अंदर, भर भर के टैलेंट है. ये क्या है? ये कौन लेता है? 50% ऑफ दे रहा है इस बंडल में, लेकिन ये लेता कौन है? ये फ्री में देना चाहिए बंडल. ये लेता कौन है ये बंडल? मेरे को भी जानना है. कौन सा बंदा है जो ये लेता है बंडल ये वाला? 50% ऑफ दे रहा है इसमें. ब्लैक क्लिप वेपन आए हैं. जिसको लेना हो ना ले सकते हैं यहाँ से ब्लैक क्लिप वेपन. ये ब्लैक क्लिप वेपन क्योंकि रेयर होते हैं, तो जिसको भी चाहिए हो ले लेना ये ब्लैक क्लिप वेपन. क्या पता फिर आए ना आए. एटलीस्ट ये तो ले ही लेना. ब्लैक क्लिप लॉन्ग शॉट तो ले ही लेना तुम में से जिसको ज़रूरत है अभी, क्योंकि इस रोटेशन में चल रहे हैं. तो ले लेना ये ख़त्म हो इस मंथ के पहले.
what they say is true. नहीं करते You have to see होंगे, the world for करते yourself होंगे to मे बी, appreciate करते how होंगे beautiful लेकिन it is. करते होंगे लेकिन फर्क नहीं पड़ता होगा। उनके समुंदर में एक पानी की बूंद की तरह है ये इवेंट। तो इवेंट करते होंगे, मेरे को पता नहीं टास्क करते हैं कि नहीं करते इवेंट के, मेरे को नहीं लगता करते होंगे। तुम्हारा हॉगवर्ड लेगेसी में क्या चल रहा है? हॉगवर्ड लेगेसी खत्म कर दिया मैंने पूरा, डेविस पूरा का पूरा खत्म हो गया हॉगवर्ड लेगेसी, कुछ नहीं बचा है। ये तो मीनिंगलेस है ना ये वाला, क्या कहते हैं तुम्हारा हीटेड बैटल मोड रीइंफोर्समेंट वाला, दिस शुड बी मीनिंगलेस आई गेस। क्लेंजिंग ऑफ सिन। मेरे को मार्कर का पे आ रहा है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है किसी पे, किसी का कुछ अनलॉक हुआ है क्या? मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है यहाँ पे। वेरी क्यूरियस। पता है मुझे, मैं देख रहा हूँ सिर्फ वो बंदा ना हर टाइप के ड्रॉप देता है तुम्हारा ये वाला बॉस, बट पता नहीं आरएनजी है या पर्टिकुलर एलिमेंट से इसको मारना होगा बॉस को। मैं वो देख रहा था एक्चुअली कि कौन कौन से ड्रॉप देता है, बट इट सीम्स वो आइस, फायर एंड वाटर टाइप के ड्रॉप देता है सिर्फ। This realm is... फिशल का 9 हो गया, इसका 4 हो गया है लेवल। If you ever have any questions... नीलू का भी 5 हो गया है लेवल को उसमें फ्रेंडशिप वाले में। आई एम गोइंग इन अजुमा राइट नाउ फॉर द चेंज ऑफ सीनरी। काफ़ी टाइम बाद इनाजुमा विजिट कर रहा हूँ मैं, पता है पैर रखने वाला हूँ काफ़ी दिनों बाद इनाजुमा में। आई थिंक 1 महीने बाद पैर रख रहा हूँ वापस इनाजुमा में। आई एम नॉट श्योर ये एक्सक्लेमेशन मार्क काहे का आ रहा है। कार्ड आई थिंक किसी का अनलॉक हुआ होता तो दिख जाता, बट कार्ड अनलॉक नहीं हुआ है किसी का, पता नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों आ रहा है मुझे यहाँ पे। नॉट श्योर किसका कार्ड अनलॉक हुआ है। पता नहीं किसका कार्ड अनलॉक हुआ है, नॉट श्योर। ऑफिशियल यूज भी नहीं करते फिर भी 9 हो गया। वाओ भाई, कमाल कहते हैं उसको, ठीक है उसको कमाल बोलते हैं, ठीक है सरनेटी पॉट का। चलो गाइस अभी रात ज़्यादा हो गई है, सोते हैं अपन सब। सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन ऑन द स्ट्रीम एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद स्पाइरल अबिस इन जेंसन इम्पैक्ट। मज़ा आएगा कल करने में स्पाइरल अबिस, सो आना मत भूलना इस स्ट्रीम पे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ गुड स्लीप एंड हैव अ ग्रेट डे फॉर यू गाइस। गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं आप लोगों से स्ट्रीम पे। बाय बाय सभी को।